And at the very outset, I'd like to welcome all the chief guests and dignitaries who have joined us from all across the world. Uh, to begin with, I'd like to welcome to this event the chief guest of this event, Shri B.S. Chamod, Honorable IAS Secretary Rajbhavan Bhopal, MP. Also, I'd like to invite Dr. Bimal Prasad Singh, Honorable VC of Sidhu-Kanu Murmu University, Dumka, for this two-day international conference. I would also like to extend my welcome to the chief speakers of this event, Sri Lakshman Raj Singh Markham, Honorable INAS, and Additional Secretary to Honorable CM of MP, and Professor Dr. Sonjharya Minch, ex-VC of S.K.M Dumka. I would also like to offer a very warm welcome to our special guests and speakers, Dr. Devendra Vishwakarma, National Secretary of SSWMA, and Dr. Prince Dan Bachi, who is joining us from Nigeria, International President of ADI Africa and member of ISSM WMA. Similarly, we also have other special guests and speakers, Mr. Moswening Mokolwani Eric, if I'm pronouncing the name correctly, who's joining us from South Africa, who is also a member of ISSM WMA. And we also have Feril Irham Muzaki from Universitas Negeri Malang, Indonesia, member of ISSM WMA. It's a moment of great happiness and joy that all of you from different parts of the world have joined us at this point of time. This conference, this two-day conference, which is being organized by Sahibganj College, Sahibganj, in association with Social Science Management and Welfare Association and Youth Economic Association and Vanavasi Kalyan Ashram, is a two-day event, which is today and tomorrow, the 9th and the 10th of August. At the very outset, I'd also like to extend my extreme happiness that this conference coincides with the World Indigenous Day, or Adivasi Divas as we call it in India. Adivasi Divas, or Indigenous Day, is celebrated today on the 9th of August, as we are celebrating the lives and stories of the Indian indigenous population. Declared and observed as the World Indigenous Day by United Nations in 1994, this day celebrates, promotes, and protects the rights of the indigenous people all across the world. Over the years, the indigenous population of India has been appropriated and tagged with different names such as Mul Nivasi, Vanavasi, Harijan, Adim Jati. But the name which has gained a larger audience in the present day is Adivasi, the healthy alternative, which we could say, to the indigenous populations. So speaking from the Indian context, one can say that the tribal or Adivasi has always found itself entrenched in the debate of development, which is also the topic of discussion in this two-day conference. How tribal development has to be seen, how it has been seen, and what is the way forward. If we were to look back at our past, at the occupation of British Empire, they justified their empire, their reign in India, as a civilizing mission of the tribals or the Adivasis. The tribals or Adivasis have always been seen as a section of society that needs to be guided and developed so that they can be in tune with the modern world. This, I think, is a flawed notion because it totally disregards the vast knowledge system that indigenous communities have come to inhabit and exercise on a daily basis. Another aspect that needs redressal is how tribes across India are understood to be a homogenized entity. The tribes in India constitute nearly 1/10 of India's population and are spread across the Indian subcontinent. A large number of them are concentrated in central, eastern, and northeastern India, in addition to the islands of Andaman and Nicobar and Lakshadweep. Thus, what we can see that it is preposterous and often error-prone if we are to see them as an homogenized entity. They exist rather in harmony with diverse forms of existence in terms of environmental surroundings, socio-cultural worldview, self-sustaining economy, and diversity. If we were to look later after the British occupation after the Indian independence, we see that the Indian government has taken necessary steps, very different from what the British did, towards understanding and alleviation of the Indian tribal population. And hence we are also aware of the Ministry of Tribal Affairs, which was set up in 1999
following the division of the Ministry of Social Justice and Empowerment, which sees how the tribals have to be developed, how the economic development of the tribals have to take place. Moving on, I'd like to bring us back to the theme of the conference, which is tribal development. And the United Nations has declared the theme of this World Indigenous Day as the theme of that is Indigenous Youth as Agents of Change and Self-Determination. Tribal development can take many forms, I believe, but chief among those is the shaping of young minds both within and outside the community. And hence, with so many students also joining us today at this point of time, I believe this conference will become a new pathway wherein students will get to know about indigenous knowledge systems and will be able to learn something new from this particular conference. We have guests and dignitaries and resource persons joining us from different parts of the world. And on behalf of Sahibganj College and the entire organizing committee, I'd like to extend my warm welcome for they are sparing their valuable time for all of us here. If we could all just mute. I would now like to welcome Dr. Devendra Vishwakarma, National Secretary of SSMWA, President of YEA, Youth Economic Association, and he is also the member of IEA and in charge of Madhya Pradesh. Today, while we are discussing different facets of tribal development, I am confident Dr. Devendra Vishwakarma will provide valuable insights and perspectives to this important subject. Sir, please, for the opening remarks, Dr. Vishwakarma. Thanks, my friend, and I thanks to all the staff member of Social Science and Management Welfare Association and the college which organized this beautiful conference. First, I thanks to respected B.S. Jamo sir, IAS and Secretary Rajbhavan Bhopal. I also thanks to Sri Lakshman Raj Singh Markam sir, Additional Secretary to CM House, Madhya Pradesh. डॉक्टर लक्ष्मण राज सर अभी फ्लाइट में है, तो मुझे लगता है कि कुछ अभी उनको देरी हो सकती है. आई आल्सो थैंक्स प्रोफेसर डॉक्टर विमल प्रसाद सिंह, वाइस चांसलर ऑफ S.K.M दुमका यूनिवर्सिटी झारखंड, प्रोफेसर डॉक्टर शोमा मैडम, एक्स वाइस चांसलर, and Dr. Rahul Kumar sir, Dr. Prince sir. I thanks to all who already joined this conference and also some international faculties and guests who already joined this conference from Indonesia, South Africa, Nigeria, Sri Lanka. First, I give some data related to the travel. We all know that there are 533 tribes as per the notification schedule under Articles 342 of the Constitution of India in different states and union territories of the country, with the largest number of 62 began in the state of Odisha. There are 476 million tribal population living in 90 countries across the world. It is the 6% of the global population. In this 6% of global population of tribes, 19% tribes is poor, which face many problems. When we talk about inter-tribes, Bhil is the largest tribe population in India. 38% of the tribal population of Bhil in India. But today we can discuss what is the definition of development, विकास. जब हम ट्राइबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जनजाति विकास की बात करते हैं, तो एक्चुअल में डेफिनेशन विकास की क्या होनी चाहिए? वी रिलेट द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट इन इनकम और मनी. अगर हम ये बोलते हैं कि विकास की परिभाषा इनकम के आधार पे होनी चाहिए, तो मुझे लगता है ठीक नहीं है. जिस तरह का वातावरण पूरे देश में या विश्व में ट्राइबल विकास को लेकर है, वो ठीक नहीं है. और कहा जाता है कि ट्राइबल कौन है, तो ये डेफिनेशन दे दी जाती है कि ट्राइबल वो है जो जंगलों में रहता है, पहाड़ों पर रहता है, जिनकी अपनी स्वयं संस्कृति है, दूर है. मुझे ये लगता है कि ये डेफिनेशन ठीक नहीं है.
अगर जनजाति समाज को, आदिवासी समाज को समझना है तो जिनके पास अपूर्व ज्ञान है, जिनकी अपनी संस्कृति है, जिनकी अपनी शिक्षा है, जो सरल हैं, जो सहज हैं, जो विकसित हैं, जिन्होंने पर्यावरण को अपना परिवार माना है, जल जंगल जमीन के लिए जो जीते हैं और इस पूंजीवादी व्यवस्था से वो दूर है। लेकिन दुर्भाग्य से देश का ये था कि स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद जनजाति समाज की सही परिभाषा इस देश में या विश्व में नहीं बताई गई। उसका बहुत बड़ा कारण भी था, क्योंकि जब ये परिभाषा गढ़ी गई तो उसमें जनजाति समाज का प्रतिनिधित्व नहीं था। दुर्भाग्य देखिए, शिक्षा संस्थानों में आज भी ऐसी परिभाषा दी जाती है, हु आर द ट्राइब्स। तो ये कहा जाता है कि वो पहाड़ों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। ठीक है, रहते हैं, वो तो सब रहते थे। एक समय था तो पूरा विश्व तो जंगल था ना। पहाड़ के किनारे पहाड़ पर इसलिए रहते थे कि पहाड़ की समस्या का समाधान हो सके। नदियों के पास इसलिए रहते थे कि जल व्यवस्था वहां रहती थी। लेकिन इस तरह का चित्रण करना कि ट्राइब यानी बैकवर्ड, ट्राइब यानी अशिक्षित, ये ठीक नहीं है। ट्राइब वो थे जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। ट्राइब वो थे जो इस देश की धरती से प्रेम करते थे, और ट्राइब वो थे जो इस देश के लिए जीते और मरते थे। जल जंगल जमीन और जानवर अगर इस देश में पूरे विश्व में सुरक्षित हैं तो उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि यह जनजातीय समाज उनकी रक्षा और सुरक्षा करता है। लेकिन उनको सही जगह नहीं मिली, उनकी उपयोगिता को नहीं देखा गया, और जिन्होंने ही भारत का इतिहास लिखा वो इतिहास ठीक नहीं लिख रहा है। इस देश में इतने आक्रांता है, लेकिन इतिहास में आप देखिए कभी ट्राइब का नाम आक्रांता के रूप में नहीं लिया जाता है। उन्होंने अपने देश की धरती, अपने समाज के लिए संघर्ष किया, लेकिन किसी पे अत्याचार नहीं किया। अगर हम रानी दुर्गावती की बात करते हैं तो इतना टेक्निकल काम रानी दुर्गावती था, सिविल का काम था, वाटरशेड डेवलपमेंट का काम था, लेकिन विश्व के मंच पे इसको कहीं बताया नहीं गया। आज भी मंदिर, आज भी वाटरशेड डेवलपमेंट के काम, आज भी तालाब आप देख सकते हैं। लेकिन ये जानबूझकर किया गया कि जनजाति समाज की, वनवासी समाज की सही छवि विश्व के सामने ना आ जाए, और आज भी इसको जिया जाता है। मुझे बड़ा दुख होता है कि इतिहासकारों ने जनजाति समाज की सही प्रस्तुति नहीं की। उन्होंने बड़ा संघर्ष किया है, देश और समाज के लिए मर मिटे हैं। और अगर आज पर्यावरण जीवित है, जल जंगल जमीन जानवर जीवित है, तो उसका कारण ये समाज है, ये सहज समाज है, ये प्रेमी समाज है, सबके दुख सुख में खड़ा होने वाला समाज है। लेकिन मैं आज के इस अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर को याद करना चाहूंगा, जिन्होंने संविधान लिखा, और वो डॉक्टर अंबेडकर जिसने शिक्षा के महत्व को समझा, शिक्षा के माध्यम से एक पाठशाले से निकलकर, विदेश से निकलकर, और उन्हें इस देश का संविधान लिखा। उन्होंने संघर्ष किया था, उनको अपमान झेलना पड़ा, लेकिन जब संविधान की बात आई, सबको अधिकार देने की बात आई, समानता की बात आई, इक्वलिटी की बात आई, तो उन्होंने जनजाति समाज की बात हो, अन्य पिछड़ा वर्ग की बात हो, सभी को एक अधिकार देने का काम किया है। और उसका परिणाम आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े आईएएस अफसर, आईपीएस, डॉक्टर, राजनीतिक क्षेत्र में, पंचायतों में ये जनजाति समाज अच्छा काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। आज विश्व के अनेक ऐसे जनजाति लीडर हैं जो विश्व के लिए काम कर रहे हैं, उसके विकास के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये छवि आज भी नहीं बताई जाती और हमारे सामने नहीं आती। जनजाति युवा बड़े बड़े आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, मेडिकल सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन ये हम सबके सामने दुर्भाग्यवश नहीं आ पाता है। लेकिन ये छवि हमारे सामने प्रस्तुत की गई है इतिहासकारों में, बिल्कुल ठीक नहीं है। ये समाज विकसित समाज कल भी था और विकसित समाज आज भी है और रहेगा भी। यह
देश और समाज प्रेमी समाज है। इसने कभी किसी के साथ अत्याचार नहीं किया, अपने लिए नहीं, ये समाज और राष्ट्र के लिए समाज जिया है। और इसीलिए जो लोग कहते हैं कि शिक्षित समाज ने, वो भूल रहे हैं कि केवल किताबी ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता है। किताबी ज्ञान से भी बड़ा एक ज्ञान है, वो हमारे संस्कार होते हैं, वो हमारी प्रगति प्रेम होता है, वो धर्म होता है, वो संस्कृति होती है। ये चीज इन समाज ने जिया है, इनकी अपनी संस्कृति है, इनकी अपनी कला है, इनका अपनी जीवन शैली है। और जो लोग इसको स्वीकार नहीं करते, ये वही लोग हैं जो समाज का भला नहीं चाहते। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आज हमारे बीच में बड़े बड़े वरिष्ठ आईएएस अफसर हैं, एक बहुत बड़े अधिकारी हमारे बीच में जुड़े हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा के दम पर अपने लिए और समाज के लिए परिवर्तन का काम किया है, और इनसे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं आज के शुभ अवसर पर पुनः डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेना चाहूंगा कि किस तरह उन्होंने संविधान में सबको अधिकार देने का काम किया है। जो पिछड़े थे उनको, जो अनुसूचित जाति जनजाति थे उनको, उनकी योग्यता के आधार पर वो आगे आए। सरकार भी पिछले अगर कुछ वर्षों में देखें तो बहुत अच्छा काम कर रही है। मनरेगा जैसे स्कीम के कारण एक बहुत तेजी से परिवर्तन आया है। आप देखिए, जो हमारा समाज गांव में पिछड़े एरिया में रहता है, तो मनरेगा से उनको केवल रोजगार नहीं मिला है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के काम बहुत ही तेजी से हुए हैं। चाहे हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कुआं निर्माण की बात कर लें, सड़क निर्माण की बात कर लें, प्रधानमंत्री आवास ने भी जनजाति के विकास में बहुत अच्छा काम किया है। आवास के माध्यम से उनके पक्के आवास मिले हैं। समूह के माध्यम से जनजाति महिलाओं को उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, अकाउंट्स खुला है। और आज हम देखते हैं कि ये समाज बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। देश के विकास में आज जनजाति समाज योगदान दे रहा है। केवल देश के विकास में नहीं, विश्व के मंच पे जनजाति समाज ने अपनी एक भूमिका बनाई है। बस समस्या ये कि इस समाज की इस भूमिका को लोग सामने लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आज भी इनका आज से 50 साल, 100 साल या 200 साल पुराना इतिहास बताया जाता है, लेकिन आज आप देखिए बहुत परिवर्तन हो गया है। आज कई देशों में प्रधानमंत्री से लेकर अनेक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में जनजाति बंधु काम कर रहे हैं। अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहां भी आप देख सकते हैं, अमेरिका के जैसे देश में जहां एक समय था जनजाति का तिरस्कार किया जाता था, आज बड़े बड़े पदों में अमेरिका में जनजाति बंधु काम कर रहे हैं। और हम सबके लिए बड़ा गौरव का विषय है कि आज हमारी राष्ट्रपति भी जनजाति परिवार से आते हैं। इतनी बड़ी उपलब्धि देने वाला ये परिवार, ये समाज, हम इसको कैसे पिछड़ा बोल सकते हैं, कैसे हम अनपढ़ बोल सकते हैं। मुझे लगता है इतिहासकारों ने जनजाति समाज के साथ ठीक नहीं किया। ये स्वाभिमानी समाज है, ये धर्म संस्कृति को जीने वाला समाज है, ये युवा समाज है जहां नारी शक्ति ने भी देश के लिए बलिदान दिया है। और विकास की अगर आप बात करेंगे, जितना गौरवाना काल, मैं जबलपुर का रहने वाला हूँ, मैं आज भी देखता हूँ उनके तालाब, उनके कुएं निर्माण, उनके सिविल स्ट्रक्चर देखता हूँ, इतना अच्छा विकास का काम कहीं नहीं हुआ है। दुर्भाग्यवश इस देश का ये था कि हमने जनजाति समाज का सही चित्रण नहीं किया है। उस देशद्रोही लोगों ने उनका सही चित्रण समाज के सामने नहीं किया है। चाहे हम कन्वर्शन की बात करें या धन के दम पर जनजाति समाज को गुमराह करने की बात आज जो हो रही वो ठीक नहीं है। ये जनजाति समाज, ये युवा शक्ति जनजाति समाज को आगे लाएगा, जनजाति समाज के विकास के लिए काम करेगा, देश के विकास के लिए काम करेगा। मुझे ऐसी आशा और विश्वास है। और मुझे लगता है कि जो गलत भ्रांतियां जनजाति समाज के बारे में इतिहास में है, उसको हम सबको मिटाना चाहिए। ये देश और संस्कृति को, ये प्रकृति को, ये जल जंगल जमीन को, ये प्रेम भाव को जीने वाला समाज है। मैं आज के शुभ अवसर पर इतना ही कहता हूँ और आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि ये जो विकास की मीनिंग है, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, इसको हमको समझना पड़ेगा। ये पूंजीवादी विकास की मीनिंग नहीं होती है कि अगर आपने कोट टाई पहनकर और शहरीकरण की ओर है तो वही विकास है। आप देखिए, जितना ज्यादा शहरीकरण होता है उतनी ही समस्या है। लेकिन आप पर्यावरण को देखना है, अगर आपको जल को समझना है, आपको कृषि को समझना है, तो जाइए वनवासी क्षेत्र में, जाइए कितना सुखी जीवन वो जीते हैं। इसको हमको लाइफ को अगर हमको देखना है तो खुशी भी एक पैमाना है विकास का, वो भी हमको देखना पड़ेगा। मैं एक छोटी सी मुझे याद है, एक मित्र हमारा था, वो जनजाति समाज से था। एक बार मैं उसके गांव डिंडोरी गया, बहुत गरीब परिवार से था,
जब मैं जाने लगा तो उसने मुझे एक खेत से लौकी तोड़ के दी, बोले हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो हम लोग कुछ ना कुछ उसको देते हैं। जिस समाज की सोच इतनी अच्छी होती है, आप ये सोचिए, कभी आपने देखा है कोई जनजाति समाज के बंधु ने भ्रष्टाचार किया हो? कभी आपने सुना है इतिहास में कि उसने किसी का शोषण किया हो? कभी नहीं सुना होगा। कभी भी उसने किसी का शोषण नहीं किया, कभी भी उसने राज नहीं किया। अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करने वाला ये समाज, ये देश और राष्ट्र की रक्षा करने वाला समाज है। आज के शुभ अवसर पर हम आप सबको धन्यवाद देते हैं। वनवासी कल्याण आश्रम इतना अच्छा काम कर रहा है, स्कूलों के माध्यम से, संस्कार केंद्र के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से हम सब अपने स्तर पर इन समाज के अगर कोई पिछड़े हैं तो उनकी मदद करें, क्योंकि हम सब भाई हैं, समाज के अंग है, हम सबके कर्तव्य वो दायित्व है। अगर भाई हमारा कोई कमजोर है तो उसकी मदद करें, क्योंकि विकसित भारत, विश्व के पटल पर भारत की जय जयकार तभी होगी तब हम सब मिलकर अपने देश के लिए काम करेंगे और ये समाज विश्व का गौरव था, है, रहेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हाँ चला गया। Thank you, sir. Thank you so much. I would now like to welcome and introduce our chief guest, Shri B.S. Jamurji, Honorable IAS, Secretary Rajban, Bhopal MP, who has graciously accepted our invitation to join us today. After having completed his BA and MA, he cleared UPSC in his very first attempt in 1990 and worked in districts such as Ratlam, Ujjain, Baitul, and Bhopal. He has received several national awards while serving in different administrative capacities, and hence I would like to welcome Shri B.S. Jamurji, who has achieved great success in the field of social administration, welfare, and development, and has significantly contributed to the community and society. Sir, please inspire us with your kind words. थैंक यू मरांडा जी, थैंक यू सो मच। आज के इस सेमिनार में उपस्थित सम्माननीय विश्वकर्मा जी, लक्ष्मण भाई साहब, डॉक्टर विमल प्रसाद जी, प्रिंसिडेंट बच्ची जी, सोना झारिया मीन जी, राहुल संतोष जी, यहाँ पर उपस्थित समस्त गेस्ट, समस्त स्पीकर्स, प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स, भाइयों बहनों, मैं हिंदी में ही बात करूंगा। और अपनी बात, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ मौजूद हैं, हम उनको सुनना पसंद करेंगे, तो अपनी बात मैं संक्षेप में रखूंगा। सर्वप्रथम तो आयोजकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर ये ट्राइबल डेवलपमेंट पे ये सेमिनार रखा है। जय जोहार, जय आदिवासी। ट्राइबल डेवलपमेंट सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। अगर हम ट्राइबल की बात करें तो निश्चित तौर पर उनकी एक छवि हम सबके सामने आती है। ट्राइबल कौन होता है? ट्राइबल, जैसा आप हम सब जानते हैं, जो संस्कृति है वो बहुत ही समृद्धशाली है और हर व्यक्ति ये चाहता है कि जो ट्राइबल जीवन शैली है उसको अपनाए। आज हम देखते हैं कि शहरों का विकास बहुत ज्यादा हुआ है, पर शहरों में शांति नहीं है, सुखी नहीं है, और वो शांति ढूंढने के लिए, सुख ढूंढने के लिए वापस गांव की तरफ जाना चाहता है, जंगल की तरफ जाना चाहता है, और उन एरियाज में जाना चाहता है जहां हमारे ट्राइबल भाई बहन निवास करते हैं। उनकी जीवन शैली देख के, उनके साथ में कुछ समय व्यतीत करके हमारे बंधु बहुत प्रसन्न होते हैं, और उसके बाद जब वापस आते हैं तो बहुत दिनों तक वो एनर्जी उनके जीवन में बनी रहती है। ये जो जीवन शैली है वास्तव में हम सब के लिए अनुकरणीय है। जहां तक बात है विकास की, ट्राइबल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो हमारी सरकारों ने अभी तक बहुत किया, पर
अभी बहुत कुछ आगे और भी करना बाकी है। अभी जैसे विश्वकर्मा जी बता रहे थे कि हमारी सरकार ने बहुत किया है। अगर हम गांव में विकास की बात करें तो महिलाओं के विकास के लिए एसएचजी बनाए गए हैं और उनको गवर्नमेंट ने बहुत सारी सुविधाएं दी। उससे हमारे गांव, हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो बहुत तेजी से विकास की गति की ओर बढ़ा है। पर ये गति है, उसको और तेज गति से आगे बढ़ाने की जरूरत है। और आज ये जो वर्कशॉप है, मुझे लगता है कि हम इन सब पे ज्यादा विचार करना चाहिए कि आज अगर हम सब समाजों की तुलना करें तो सबसे अगर पिछड़ा कोई समाज है तो निश्चित तौर पर ट्राइबल ही समाज पिछड़ा हुआ है, मुख्य धारा से बहुत दूर है। अगर हम बात करें परिभाषा की, ट्राइबल की परिभाषा क्या है, तो जो लोकुर कमेटी ने बताया है तो उसमें ट्राइबल में कौन कौन शामिल होते हैं, तो उसमें उन्होंने बताया है कि आदिम लक्षण अर्थात जीवन जीने की जो कला शैली है वो आदिम शैली है। उनकी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। भौगोलिक दृष्टि से वो बहुत अलग होते हैं, सभी लोगों से संपर्क में नहीं रहते हैं, अलग थलग रहते हैं और कोई भी बात अपनी रखने में संकोच करते हैं और पिछड़ापन। ये लोकुर कमेटी की एक परिभाषा में ये तथ्य शामिल किए। ट्राइबल पॉपुलेशन बोलता, जो बोलने की बात है, वो कोई भी बात है वो नहीं कहता है, अपनी कोई भी बात हो, कोई भी समस्या है, उसको रखने में बहुत संकोच करता है। अगर मैं हमारे गवर्नर साहब की बात करूं तो गवर्नर साहब ये कहते हैं कि देखिए, और कोई समाज होगा तो अगर उसको एक चांटा पड़ा तो समाज बहुत जोर से चिल्लाएगा, अरे मारा रे मारा, मारा मारा मारा, और पूरा हल्ला कर देगा चारों तरफ और सबका ध्यान आकर्षित कर देगा। अगर कोई ट्राइबल व्यक्ति है, उसको किसी ने किसी भी कारण से चार झापट भी मार दिए, वो सोचेगा कि चलो ठीक है, क्या करना, कोई बात नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं करना, आगे बढ़ जाए। तो ये जो लक्षण है ट्राइबल्स के, वो आज भी विद्यमान है। जहां तक उनके आगे बढ़ने का प्रश्न है, वो बहुत ही संतोषी होता है। वो संग्रहण कुछ भी नहीं करता, लालच कुछ भी नहीं करता है, और जो कुछ भी कमाई करता है वो अपनी मेहनत के बल पे कमा कर ही खाता है, बिना मेहनत के वो नहीं खाता। ये बहुत ही गर्व की बात है और मैं गर्व के साथ हम कह सकते हैं, अगर शहरों में भी या गांवों में भी देखा जाए कि भिखारी कितने हैं, तो उसमें आपको एक भी आदिवासी भिखारी, जनजाति भिखारी नहीं दिखेगा। अभी कुछ समय पहले ये कार्यक्रम था, उसमें हमारे ऑफिसर्स भी गए थे। एक धार्मिक आयोजन था, बहुत बड़ा आयोजन था, और उसमें हमारे ऑफिसर्स गए थे। उसमें कहा कि सर वो धार्मिक आयोजन था पर वहाँ भिखारी बहुत थे। हमने कहा कि आप भिखारी कौन थे, तो उन्होंने कहा सर वो शायद आदिवासी होंगे। मैंने कहा देखिए, अगर वो भिखारी है तो वो आदिवासी तो नहीं हो सकता है, और अगर आप जानना चाहते हो कि उसमें थे या नहीं भिखारी, तो आप जहाँ पर कार्यक्रम था उनके आयोजकों से पूछें कि वो कौन थे। जब आयोजकों से पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि जो भिखारी थे उनमें एक भी आदिवासी नहीं था। ये उन्होंने प्रमाणित किया। कुल मिला के ये कि जो आदिवासी व्यक्ति हैं वो अपना स्वाभिमान से जीता है, भीख मांगना कभी भी वो पसंद नहीं करता है। दूसरा, वो अपने जवान का पक्का होता है। अगर वो गरीब से गरीब व्यक्ति भी है और अगर उसने कुछ कहा कि हाँ उसको ऐसा करना है या वो ऐसा करेगा, तो कुछ भी हो जाए, वो अपने जवान को पूरे तरह से खरा उतरने का प्रयास करता है। सारा प्रयास वो कर लेता है, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ता है। अगर हम विकास की बात करें तो सबसे पहले हम शिक्षा की बात जरूर करेंगे। ये हमारे सभी
जो वक्ता हैं आगे आने वाले वो भी जानते होंगे कि शिक्षा की दृष्टि से हमारा समाज सबसे पिछड़ा हुआ है। अगर हम साक्षरता दर देखें तो अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो नॉन ट्राइबल्स में जहाँ लिटरेसी रेट 64% है, वहीं पर ट्राइबल पॉपुलेशन में 41% लिटरेसी रेट है। उसी तरह से इंडिया की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया भी हमारा ट्राइबल पॉपुलेशन में लिटरेसी रेट सबसे कम है। शिक्षा विकास की धुरी है और अगर हमको विकास करना है तो शिक्षा पे सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। ट्राइबल एरिया हम सब लोग जानते हैं, ट्राइबल एरिया में एक तो ट्राइबल एरिया पहुंचविहीन होता है, वहां पर साधनों का अभाव होता है, कोई भी टीचर्स होता है वो वहां पर रहना कम ही पसंद करते हैं। ये सब माहौल ऐसा है जिसके कारण हम आज की तारीख में शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। अगर शिक्षा का स्तर हमको सुधारना है, ट्राइबल पॉपुलेशन को एजुकेट अगर करना है, तो मेरा ये मानना है कि रेसिडेंशियल स्कूल हमें सबसे ज्यादा बनाने होंगे ताकि जो ट्राइबल बच्चे हैं वो रेसिडेंशियल स्कूल में रह के पढ़ सके। अगर हम आज के तारीख में स्कूलों की जब बात करें तो जो टीचर्स हैं वो गांव में जाते जरूर हैं पर उनका अध्यापन पे ध्यान नहीं रहता है। टीचर जाता है वहाँ गांव में जाता है, आधा घंटा रुकता है, थोड़ा बहुत पढ़ाया नहीं पढ़ाया और अपना बाइक उठाई और वापस अपने निवास स्थान की ओर चल देते हैं। यही कारण है कि हमारा समाज आज भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। रेसिडेंशियल स्कूल अगर होगा तो बच्चे वहां पर रह के सही ढंग से वहां पढ़ाई कर सकते हैं। बच्चे घर से जब स्कूल जाते हैं तो वो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, ट्राइबल व्यक्ति ऐसे भी आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं होता है। जब सक्षम नहीं होता है तो निश्चित तौर पर जो भी बच्चा होगा उसकी हेल्प लेना चाहेंगे। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊं, एक स्कूल में जब मैं गया, अक्टूबर का महीना था, मिडिल स्कूल था और मिडिल स्कूल में कुल जमा 5 स्टूडेंट्स वहां मौजूद थे। जब टीचर से मैंने ये कहा कि तुम्हारे यहाँ कितने बच्चे दर्ज हैं, तो 5 टीचर्स थे और 5 बच्चे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ मिडिल स्कूल में 67 दर्ज संख्या है पर 5 ही उपस्थित थी। हमने कहा क्यों, बाकी के बच्चे क्यों नहीं आए? उनका कहना था सब अब सीताफल का सीजन है, सीताफल टूट रहे हैं तो सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ में सीताफल तोड़ने के लिए चले जाते हैं। देखिए, उनके पेरेंट्स के लिए सीताफल तोड़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत की उनको स्कूल भेज के उनको शिक्षित करना। पेरेंट्स को शिक्षा का महत्व नहीं मालूम है, इसलिए उन्होंने अपने छोटी सी आमदनी प्राप्त करने के लिए उन बच्चों को अपने साथ सीताफल तोड़ने के लिए ले गए। कुल मिला के ये कि टीचर ने भी उन्हें ये समझाइश नहीं दी, काउंसलिंग नहीं की कि बच्चों को स्कूल भेजना कितना आवश्यक है। तो पेरेंट्स क्योंकि उतने समझदार नहीं हैं तो उन्हें उस बात की जानकारी नहीं होती है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें या सीताफल तोड़ने या अन्य कामों में लगाएं। दूसरा, मैंने ये भी देखा है कि टीचर स्कूल में जाता है, उनके पेरेंट्स से कभी भी संपर्क उनका नहीं होता है। चलते चलते राम राम श्याम श्याम हो गई तो हो गई, अदरवाइज अपनी तरफ से उन बच्चों के पालकों से संपर्क करने का कभी भी प्रयास नहीं करते कि वो जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स से संपर्क करके उनको समझाइश देके उनको स्कूल तक लेके आए। गवर्नमेंट बहुत सारी सुविधाएं दे रही पर उनको सही ढंग से क्रियान्वित करने की जरूरत है। आज की तारीख में प्राइवेट स्कूल बहुत सारे संचालित हो रहे हैं, छोटे छोटे से गांव में भी प्राइवेट स्कूल संचालित हो रहे हैं और गरीब से गरीब व्यक्ति भी है तो वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना ज्यादा पसंद करता है बनिस्बत की गवर्नमेंट स्कूल।
गवर्नमेंट स्कूल में सारी सुविधाएं दे रही हैं, फीस नहीं लगती है, यूनिफॉर्म मिलता है, बुक्स मिलती हैं, मध्याह्न भोजन मिलता है, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, स्कॉलरशिप भी मिलती हैं, किंतु बच्चे को जो पेरेंट्स शिक्षा के महत्व को जानते हैं वो प्राइवेट स्कूल में पैसा खर्च करके पढ़ाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पर पढ़ाई अच्छी होती है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, ये धारणा बनी हुई है। तो इसकी तरफ भी हमको ध्यान देना होगा कि जितने भी शासकीय संस्थाएं हैं वो सही ढंग से कार्य करें और उनका जो मुख्य ध्येय है लोगों को शिक्षित करने का, उनकी तरफ वो सब लोगों को खींच के लाए। कंप्यूटर शिक्षा, आज की तारीख में अगर व्यक्तियों को कंप्यूटर की जानकारी नहीं है तो वो अनपढ़ के समान है, और ट्राइबल एरियाज में कंप्यूटर शिक्षा की कोई सुविधा नहीं है। हमें सब मिलके ये प्रयास करना होगा कि हम सारे मिडिल स्कूल से लेके हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और सारे शैक्षणिक संस्थाओं में हम कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करें। अगर ऐसी व्यवस्था हो जाती है तो निश्चित तौर पर हमारा बच्चा भी, जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं, वो भी दूसरों से कंपटीशन कर सकता है और वो उनसे आगे निकल सकता है। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, ट्राइबल व्यक्ति प्रकृति के बीच में रहता है, ज्यादातर व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं, किंतु बहुत सारे वहां पर परिस्थितियां ऐसी भी हैं जो उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती हैं, और स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ज्यादा मुहैया नहीं है, खान पान पर भी वो ध्यान नहीं दे पाता है। इसकी वजह से अस्वस्थ भी रहता है और कुपोषण के शिकार भी होते हैं। ज्यादातर बच्चे ट्राइबल भी होते हैं, तो उस पर भी हमको ध्यान देना होगा। और कुपोषण से मुक्ति की ओर अगर हमको बहुत तेजी से आगे बढ़ना है तो हमें पशुपालन पर भी उतना ही फोकस करना होगा। पशुपालन करेगा तो निश्चित तौर पर जो भी हमारा परिवार है वो दूध, घी, दही, अपना परिवार वो तो खेती वो करते हैं, जमीन भी है, किंतु उनकी भूमि होती है वो अनउपजाऊ, पथरीली, उबड़ खाबड़। अगर उसको हमें कृषि के विकास की तरफ ध्यान दें तो निश्चित तौर पर हमारी जो आमदनी है ट्राइबल परिवारों की वो बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती है। बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जो हम उनकी कृषि में सुधार ला सकते हैं और आमदनी बढ़ा सकते हैं, तो उस पर भी हमको ध्यान देना होगा। रोजगार के क्षेत्र में भी देखें तो देखिए, कृषि से हमको व्यवसाय की ओर मुड़ना होगा। कृषि, अगर परिवार जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो कृषि भूमि उनकी कम होती जा रही है और हमारे परिवार सारे कृषि पर ही डिपेंड है। तो कृषि पर निर्भरता को कम करके अन्य व्यवसाय की तरफ ले जाना होगा। जितने भी हमारे स्कीम्स हैं उसमें स्वरोजगार योजनाओं का लाभ दिलाना होगा। छोटे छोटे गांव हैं वहां पर दुकानों का निर्माण करना होगा। जो ग्राम सभाएं हैं उनको सशक्त करना होगा और जो सबसे गरीब परिवार है उनको स्वरोजगार स्थापित करके उनको आगे बढ़ाना होगा। इस तरह से अगर हम प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर धीरे 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 हम उन परिवारों को बहुत तेज गति से विकास की मुख्य धारा में शामिल कर सकते हैं। फॉरेस्ट की जहां तक बात करें तो हमारे पूरे भारतवर्ष में 60% फॉरेस्ट हमारे ट्राइबल एरियाज में, और तो हम कह सकते हैं कि हमारे ट्राइबल परिवारों की वन पर निर्भरता काफी अधिक है। तो जितने भी माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं
उन पर ग्राम सभाओं का स्वामित्व होना चाहिए। जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में भी ये प्रावधान दिए गए हैं, ऐसा जो एक्ट बना हुआ है उसमें भी ये प्रावधान दिए गए हैं। तो उनको सही ढंग से उनका स्वामित्व हो जाए, उस पर हमको ध्यान देना होगा। और न सिर्फ फॉरेस्ट प्रोड्यूस संग्रहण करने का अधिकार दिया जाए, बल्कि हमें ये प्रयास करना होगा कि उस एरिया में प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाएं, ताकि उसको प्रोसेस करके फिर पैकेजिंग करके अगर विक्रय करेंगे हमारी ग्राम सभाएं, हमारे ग्रामीण भाई बहन, तो निश्चित तौर पर अच्छी आमदनी उन्हें प्राप्त हो सकेगी। उसी तरह से एग्रीकल्चर क्षेत्र में भी हमने प्रोडक्शन बहुत होता है, किंतु फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हमारे लोगों की नहीं होने की वजह से दूसरे लोग लाभ लेते हैं, और हमारे जो ट्राइबल भाई बहन हैं, ट्राइबल फैमिलीज हैं, उनको ज्यादा आमदनी नहीं हो पाती है। लेबर का आप सब लोगों को मालूम है, हमारे जो गरीब परिवार हैं वो ज्यादातर पलायन दूसरे स्टेट में कर जाते हैं अपनी आजीविका ढूंढने के लिए। अगर हम उन्हें अच्छी खेती करना सिखा दें और अच्छे व्यवसाय स्थापित करा दें, तो निश्चित तौर पर जो लेबर के रूप में पलायन होता है और दूसरे स्थानों पर वो एक नर्क की जीवन जीता है, उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। बहुत सारे जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, उससे हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन ही सबसे ज्यादा विस्थापन का शिकार होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होना बहुत ही ज्यादा तकलीफदायी होता है। यद्यपि विकास के लिए विस्थापन होना चाहिए, किंतु अगर विस्थापन करना आवश्यक भी हो तो उन्हें सबसे पहले अच्छी तरह से सेटल कर दिया जाए, और उसके बाद फिर वहां पर प्रोजेक्ट का कार्य प्रारंभ किया जाए। हमारी संस्कृति अगर हम देखें तो हम धीरे धीरे हमारी मूल संस्कृति है उससे हम दूर होते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति छूटती जा रही है, खास करके जैसे जैसे शिक्षा का स्तर ऊंचा होता जा रहा है, या हम शहरों की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, शासकीय सेवा में ज्यादा जा रहे हैं, हमारी संस्कृति छूटती जा रही है। जैसे जितने वाद्य यंत्र हैं हमारे, उन वाद्य यंत्र हमारे छूटते जा रहे हैं और डीजे की तरफ चलते जा रहे हैं। जितनी भी हमारे परंपराएं हैं, उन परंपराओं को भी हम भूलते जा रहे हैं। तो ये जो जनजातीय संस्कृति है उसको भी जीवित रखा जाना जरूरी है, और ये हम सब मिलके ही कर सकते हैं। सब हम अगर एक साथ हमारी संस्कृति को जीवित रखने के लिए प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पर एक जो हमारी गौरवशाली परंपराएं हैं उनको हम जीवित रख सकते हैं। ये कुछ विचार मैंने रखे हैं। आगे बहुत सारे और भी वक्ता हैं, मैं और अधिक समय नहीं लूंगा। पुनः आप सभी लोगों ने ये बहुत शानदार एक संगोष्ठी का आयोजन किया है, उसके लिए मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। और ये जो संगोष्ठी है, ये ट्राइबल डेवलपमेंट की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you so बहुत बहुत धन्यवाद। for enlightening us with different facets of tribal development and your personal experiences of the same. Next, I'd like to invite Dr. Prince Dan Ambachi to share his thoughts with us. He's joining us from Nigeria. Dr. Prince. I think there is some difficulty in reaching out to Dr. Prince. In that case, I'd like to invite Dr. Rahul Kumar Santosh, the chairperson of this two-day conference,
to share his thoughts with all of us. He's the brains behind this conference. So we'd like to invite Dr. Rahul Kumar Santos. प्लीज अनम्यूट सर। सर आपका साउंड नहीं आ रहा है। विक्टर सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो सभी विक्टर सर, डॉक्टर प्रिंस डॉन फ्रॉम नाइजीरिया सर ऑलरेडी ज्वाइन। ओके ओके, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, मैं दूसरे से ज्वाइन कर रहा हूं। ओके सर। Okay, sir. Okay. आज के इस 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च इन ट्राइबल डेवलपमेंट में उपस्थित डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा सर, नेशनल सेक्रेटरी SSMWA, प्रेसिडेंट YEA एंड MPM, श्री BS जामोद सर, ऑनरेबल IAS एंड सेक्रेटरी राजभवन भोपाल, श्री लक्ष्मण राज सिंह मार्कम सर, ऑनरेबल INAS एंड एडिशनल सेक्रेटरी टू ऑनरेबल CM ऑफ MP। कुछ ही देर में हमारे ज्वाइन करेंगे माननीय वाइस चांसलर S.K.M दुमका, प्रोफेसर डॉक्टर विमल प्रसाद सिंह। आज के डॉक्टर प्रिंस दान बाची, नाइजीरिया, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट ADI अफ्रीका एंड मेंबर ISSMWA। हमारी एक्स वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सोना झरिया मिंज, और आज के इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं प्रोफेसर सेमी विक्टर मरांडी सर। हमारे इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में सहयोग देने वाले ब्रजेश सर, मैं सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित यह कार्यक्रम पूरे विश्व में आदिवासियों को एकजुट करने का दिन है। आज का दिन आदिवासी सभ्यता और संस्कृति को बचाने का दिन है। हमें सभी कोई को प्रेरित होकर
आदिवासी सभ्यता और संस्कृति को बचाना है। आज हम सभी जगह देख रहे हैं कि जल, जंगल और जमीन की लड़ाई हो रही है। हमें जंगल को बचाना है। जल ही जीवन है, हम जानते हैं, और जमीन ही आदिवासियों का मुख्य जीविकोपार्जन का साधन है। अतः हम सभी भारतवासियों का यह कर्तव्य है कि उनके इस परंपरागत सभ्यता, संस्कृति, जीविकोपार्जन के साधन को हम बचाएं। आप जानते हैं कि संथाल परगना की धरती सीधो, कान्हू, चांद, भैरव, फूलों, झानों की धरती रही है। यह धरती वीरों से भरी धरती है। 1854-55 में सर्वप्रथम पूरे भारत में फूल क्रांति इन्हीं आदिवासी भाई और बहनों के द्वारा किया गया। इसका अगर सार हम देखें तो हम यह पाएंगे कि यह क्रांति उनके इस सभ्यता और संस्कृति में कहीं न कहीं हस्तक्षेप का परिणाम था। जब तक इनके सभ्यता, संस्कृति, इनके जीवन यापन के तरीके पर हस्तक्षेप नहीं किया गया, तब तक इन लोगों ने कभी किसी भी प्रकार की कोई क्रांति या कोई किसी भी प्रकार का हूल नहीं किया। और हमारे भारत का सर्वप्रथम क्रांति था। इसी क्रांति से हमें प्रेरणा मिली और हमारे 1857 का विद्रोह हुआ। तो हम लोग यह देखेंगे कि ये आदिवासी देखे हैं कि यह आदिवासी समाज कभी भी किसी के का गुलाम नहीं रहा है और न ही कभी किसी के जीवन यापन में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किया। ज्यों ही उनके जीवन पर या उनके जीवन यापन के तरीके पर, सभ्यता और संस्कृति पर जब जब हस्तक्षेप हुआ है, तब तब विद्रोह हुआ है। आज आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर हम यह प्रण करें कि सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका लाभ उन लोगों तक पहुंचे। संथाल परगना में हम देखेंगे कि पहाड़ों में रहने वाले पहाड़िया जनजाति हैं जो आज भी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। अतः हमारा फर्ज है कि हम आज प्रण लें और सभी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाएं, जिससे कि वो समाज भी शिक्षित हो और आगे बढ़े और उनका किसी भी प्रकार का शोषण न हो। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Dhanyawad, sir. Thank you, sir. Next, I'd like to invite Dr. Prince, if he's here with us now. Dr. Prince Tan. There is some technical issue, so please call next. Unmute, sir. Dr. Prince, please unmute. Your sound is off. Okay, can you hear me now? Yes, sir. Yes, sir. Please welcome, sir. Okay. Please. Okay, welcome. Good morning, good afternoon, good evening, anywhere you are viewing from. I'm Dr. Prince Bachi, the International President at Africa, Nigeria. In terms of the tribal development, we have also looked at the issue of tribal development. This lecture today is a very amazing one. And this lecture is amazing and very interesting. I'm also said that the tribal development in terms of, like, I will use Nigeria as a case study.
in terms of tribal development, there's always a way that things are being done, even in Adi Africa. So some of those things that we're doing and trying to put in place to talk about the tribal development, it has like the influence of the government. I think we are still having some technical issues on his side. So meanwhile, we'll move on. And do we have Ferhil Irham Muzaki from Indonesia, Universitas Negeri Malang? If he's here, then we can. Hello, sir. Hello. Hello, sir. Yes, sir. Yeah. If we can have your Okay. talk. Okay, thank you so much for the chance. Now, I would like to share my thought on this. We could exploring the essentials, mean, mode, median, and range for statistical analysis in educational research in elementary schools at triple areas. Okay. Thank you so much for the chance. Now, this is the background of the study. Statistical analysis is a crucial tool in research, allowing researchers to make sense of data, draw meaningful conclusions, and make informed decisions. By understanding the importance of these measures, educators could enhance their teaching practice, identify areas of improvement, and promote evidence-based decision making to benefit their students. Okay, before we enter the topics, we could discuss about ordinal numbers or nominal numbers. Ordinal numbers and nominal numbers are two distinct types of categorical data used in various fields, including statistics, linguistics, and social sciences. They serve different purposes and convey different level of information. So here's the definition. Ordinal number represents ranking of order of item where the categories have a meaningful sequence of hierarchy. The order of categories matters, but the numerical difference between the categories is not meaningful. For instance, first, second, fourth, or letter grade is
A, B, C, D. So there is no meaningful relation between numbers and the matters. Okay, so what's the difference is the nominal numbers is the opposite. It refers on categories with any inherent order ranking between them. Their motive and do not have any quantitative meaning. For instance, type level like apple, banana, orange, grape, yellow, and so on. So in other hand, nominal data doesn't imply any natural ordering, different with ordinal number. So let us discuss the first topic, mean. Analyzing mean in elementary school research, particularly in the context of second language teaching, is essential to gain valuable insight into students' language proficiency and academic performances. In elementary school, teaching research analyzing the mean help educators and researchers to understand the overall language proficiency of students, assess the effectiveness of language teaching strategies, and identify areas of improvement. Okay, so we could say that, in other words, the mean also the average. For instance, sum of our data point divide number of data points. So we could add up all scores and divide the sum by number of data points. Okay, so the mean score is 85.6. Okay, we have to know that conducting research in tribal area, analysis mean could identify the pattern, trends, and disparities within the community. On the other hand, we have to consider the cultural context, historical factors, and unique challenges faced by this community. So we cannot provide it with the data. Okay, the second one is the mood. So the analysis mode involving identifying most frequency occurring value of the category in given set of data. For instance, the first one is the organized data, and the second one is count the frequency is the value or category. Step 8, determine the mode and interpret the mode. But analyzing the mode in research on the tribal area, it should be based on local wisdom, should provide valuable insight into preferences, practices, and cultural norms of the community. So we have to get on this. The median is a statistical measure used to describe the general tendency of set of data. In other words, it divides data into two equal halves. So calculated. First one is organic data. Second one is identify the middle of the value. And the third one is measure the center of tendency. So the analysis, the median in statistical research based on the local context in a tribal area involve understanding of the distribution value within a data set, considering the specific characteristics and circumstances in the community. Okay, and the last one is range. In research for elementary school, especially in tribal areas, the range is a statistical measure that provide information about spread of variability set of data. So how to calculate? The first one is the organic data. Second one, identify maximum and minimum values. And the third, calculate the range, subtract the minimum value from the maximum value. Mathematically, the formula calculated range is value is the maximum value minus minimum value. So in the context of lexical language research, especially in tribal areas, the range of language proficiency score can give the diversity of language abilities within the group of students. A larger range
might indicate more varied level of language proficiency, while a small range might suggest more consistent level of language development among students. On the other side, we have to know that statistical research at tribal area, while focusing on traditional values of the community, can provide valuable insight into variability and diversity within the community. So we could say that we have to consult the result with community members. Cultural awareness is crucial to ensure that the analysis with the community should go with their perspective and priorities. So in conclusion, exploring the essential of mean, mode, median, and range for statistical analysis in elementary school research is a paramount important for education researchers and administrators. Exploring this should tailoring educational practice. On the other side, we have to conduct that statistical analysis for underscore in tribal area to conduct with careful consideration of unique characteristics, challenges, and cultural context of the community. It is crucial to involve local stakeholders, including teachers, parent, community leaders, and their representatives throughout the statistical process. Okay, I think that's all. These the references. Thank you so much for the chance for me to speak. I'm glad for you to invite me here. Thank you. Thank you, Feril sir. Next speaker we have Mokulwane Eric. Sir, if you are here, then please. आर्ट पढ़े थे कि साइंस पढ़े थे स्कूल में? आर्ट कौन सी स्कूल में पढ़े हो? Well, good morning, good day, good afternoon, good evening, everywhere you at. My name is Masone Mukulwane Eric from Mpanama Village in Sekhukhune East District, Limpopo Province, South Africa. Allow me to acknowledge the organizers, the hosts, and everyone who has made this session a success. I just want to tell you that the topic this session is of utmost importance for the development and success of our various tribes. I am of the view that tribal development is one amongst the developments that the society, the world needs. And as such, every single member of the society bears the brunt of the successes of their tribes. And as such, I am from a community that is tribal, and I'm going to use my village as my case study in this regard. My community is in between the mountains and behind mountains, where there is poor network reception, unemployment is high, we are far from the main services, we are a poverty-stricken area. There are many schools with learners who are willing to learn, and we are concentrated in a tribal community of the southern, or Barwa in my mother tongue. My community is about 3,010 households, which is an estimate of about 21,000 community members. 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 21,000 community members
So I want to acknowledge that I am from a tribal village where we are led by our tribal chief, and we are practicing our traditional customs in Sikukune East District, wherein our tribe is at an estimated number of 7 million. And in this regard, our district or our tribe, which is the only one in our district, believes in ancestral worship and gods. That is the practice that most of my tribe are involved in. And we are also a tribe that takes young men and women to go on to attend initiation school, which is our traditional practice that welcomes young men and women into and prepare them into adulthood. Now, I just want us to look at the definition of the concept or the name tribe. It is defined by jurists as a social group which is identified by a common territory, dialect, cultural hegemony, social and political organization. In this regard, it means there should be an extensive and identified commonality between members of a particular tribe. And looking at the concept development, development is change that is desirable, that everyone likes, that is planned, systematic meaning, and administered by governmental action. Now, the concept development encompasses the following: an aspect of change, a plan or prediction, governmental involvement, and people should be free to meet their aspirations. Development is also a powerful tool for transforming any society in terms of economic needs, social needs, political needs, and administrative aspect. Now, society can be developed or undeveloped due to a number of issues that are as a result of human activity. So meaning that it is up to the community and everyone involved to either make a community developed or to make it underdeveloped. And we should also be aware of the fact that we can have a weaker economic front, whereas we have stronger social front. So that needs balance for for the development of any tribe to be a success. And this suggests that development should be multidimensional, and we should be considerate that development varies from one region to another. What happens in my area might be influencing what will happen in another. Now, rural tribal communities, especially where I am, are prone to underdevelopment as a result of poor social, economical, political, and administrative mobility. And as such, development becomes hindered. Now, as an educator from this poor tribal community, I am using education as a tool to sharpen young minds in tribal community.
And how do I do that? I am using technology tools to bridge the digital divide and to make sure that we collaborate with classrooms from elsewhere in the world in a way of trying to implement Sustainable Development Goal number 4, which is quality education that is accessible and inclusive to everyone indiscriminately. And Sustainable Development Goal number 17, which is collaboration for goals. That is what we are doing right now. I am also using modeling theory by Bandura, which says an adult should model any activity so that young people will be able to learn from. So in so doing, I am doing this through gardening project, wherein I involve my learners because we are from a poverty-stricken area. And in this regard, learners go home with vegetable at the end of the day. And in so doing, I am implementing Sustainable Development Goal number 1 and number 2, no to poverty and hunger. And I'm also making sure that I develop my tribe, especially in Panama, my village, as my case study, on how to take good care of the environment, on how to keep our environment clean through the implementation of Sustainable Development Goal number 13, which is climate action. And I am also involved in developing my tribe through youth seminar. Remember, we are far from the main services. And in this regard, I educate young people, bring community members together to deal with a number of social issues that are affecting our community. And in this regard, I am enhancing better tribal development in my area. As an educator, I am also using educational tools and career guidance to make sure that I develop my tribe through virtual field trips, through online career guidance programs, using augmented apps to travel in different places, and to make sure that these kids who are in the most underdeveloped area are getting access to information that will develop our community and our tribe. I am also using agricultural activities for tribal development, wherein I'm engaging parents of the same learners from my community to make sure that they work for themselves within the school environment through gardening project, the permacultural model, such that when they go home, they are able to feed their families. As I've indicated, that I am in a poverty-stricken area that is semi-arid. And again, in terms of tribal development within this gardening project, where I'm involving both learners and parents, I am using tires, as you can see from the screen. And the reason why I am using tires, South Africa is characterized by demonstrations that are more violent. And in this regard, people in rural areas, in townships, in the cities, are using the same model when they picket or when they demonstrate. They are burning tires. So instead of using tires as tools to destroy the infrastructure that is user-friendly to everyone, I am using tires to plant vegetables and fruit, such that I am repurposing the use of tires. And in this regard,
I am implementing Sustainable Development Goal number 1, 2, 3, and 4. And number 3 in this regard, or in essence, refers to good health and well-being. So once people are able to access food, their health will be enhanced. That is one amongst the major developments that we are undertaking in rural areas, especially in my area as an educator. I am also using innovations in rural contexts through artificial reality apps such as the Mesh Cube, because these learners need to be part of the global community, need to explore what other communities are not able to access and what other communities who are advanced are able to access as well. I'm also using these augmented reality apps to make sure that I fasten knowledge, I empower them with knowledge that is more advanced, that people in the most advanced areas are getting or are receiving. Now, in a way or in one way or another of collaborating with international peers, I am using debates and discussions with global peers so that I can develop these poor learners from this tribal community that is backward to develop their metacognitive skills. Remember, metacognitive skills refers to skills that make or enhance learners to think about their own thinking. And I am also using this international collaboration for these poor learners in this poor tribal village to develop the international use of language. Because remember, we are speaking one language throughout, which is Sepedi. So in these international collaborations, they are able to learn or to use English as our lingua franca. And in this sense, I am trying to dispel the social exclusion myth that young people and everyone in rural area has. Now, the fourth industrial revolution tools are also significant to develop tribal schools. We are using coding, for instance, in my school, that is in my area, Parma village, as my case study, to make sure that learners generate creativity skill, problem-solving skill, and critical thinking skills, such that we bridge the digital gap and the digital divide that exists between the haves and the have-not. They generate cutting-edge use of technology tools, skills. They generate information literacy skill, media literacy skills, and ICT literacy. That is what we can do in these poorly and underdeveloped tribes that we find ourselves in. I am also using Zoom, which is part of the technological development in rural areas or in these tribal areas, to develop collaboration and communication skills, to make sure that learners are generating problem-solving skills and decision-making skills, especially through misdescribes. Now, through the use of edu technology tools, young people in these tribes in rural areas will be engaged, and this will spark critical thinking skill. I'm also helping tribal learners to become global citizens. Through Skype, my learners learn state symbols, they learn about capital cities of other nations, they learn about the most important days, such as the independent days in different nations. They learn about the international dress code, international cuisines, and the national flags of other nations. I am also involving these poor learners in this tribal area in word reading aloud days and hours of an hour of coding. And remember that World Reading Aloud Day takes place every year in the first week of February
the first Wednesday, wherein I am trying to build the connection between spoken and written words in teaching these learners. And it is said that in my country, the 2022 Statistics South Africa is saying that 82% of the learners who are in grade 4 cannot read for meaning. So in involving them, I am trying to bridge that gap, to close that gap, because majority of these learners who cannot read for meaning are from these underdeveloped tribes. I am also trying to strengthen vocabulary and fluency because they are in the closed set. So I'm trying to open them up to the wider world in order for them to develop high-level thinking and computer skill through engaging them in the 4IR tools. Now, how can tribal development be enhanced in this regard? There must be special development programs that the government brings about, that the community members brings about, or the community leaders brings about. There must be education and training programs that the government brings about, leaders brings about, so that development can be enhanced. We need to improve economic conditions like I am doing by bringing agricultural activities, by protecting our forests, and by making small-scale industries. We also need to strengthen school infrastructure, bring technology tools in the classroom, and to make sure that learners are accommodated and encourage more learners to come to school. We need to construct vocational training. In this regard, the government is the one that is responsible, so that people in rural areas, in these tribal areas that are underdeveloped, are able to access knowledge and information. We need to provide these tribes with basic amenities such as hospitals, such as running water, such as toilets, such as shopping centers, such as better schools, electricity that is more advanced. And these communities need financial assistance for economic development. And up to this end, I want to take this opportunity to thank you and to thank everyone who is taking part in this session. May God bless you. I thank you. Thank you, Erickson, for this very nice paper. And wherein you have talked about your village and all the different steps that you are taking towards the development of the little learners. We'll move on to the next session. And because VC sir is still not here with us, we'll open the session for other presenters. So I'll read out the name of the paper presenters for the next session. If anybody is here, then please read out your paper. We have Mamta Ghormare, Mahendra Kumar Jaiswal, Rajkumar, Madhu Kumari, Dr. Priya Rao, Dr. Gopiram Sharma, Dr. Anjali R. Mascarenhas, Mohammad Nazir, and Devyendu Shah. Do we have Mohammad Nazir? Yes, sir. We have. Sir, if we can have your paper if you're ready. Yes, sir. You can read out your paper, sir. So can I present my paper, sir? Yes, please.
Kushal Roy, please present your paper. Okay. Yes, there is some disturbance, but yeah, we can hear you. Yes. Am I audible? Yes, yes. Sir, myself, Emily Nazu. May allow me to present? Thank you. Yes, please go forward with it. Okay, sure. Good afternoon, all the respected Indian personalities, the organizers, and the participants. All right, sure. Firstly, I would like to thank you all for giving me a chance to deliver speech on a topic on tribal development perspective of mine India. Nowadays, we can see that most of the tribal people are involved in mine India as labor. After the age of about 60 years, they are facing physical issues because of mine job. My topic is novel move on entrepreneurship from abandoned coal mine details as a tool for socio-economic development of tribal people in Raniganj coalfield of West Bengal, India. So I'm very thankful to my guide. So now I'm starting my presentation. Tribal Development 2020 published by the Bharat Rural Livelihoods Foundation stated about the new socio-economic development among tribal people. So lack of entrepreneurship is an object of thought. So in this presentation, it has great significance and importance regarding this perspective. So my study area is Raniganj coalfield. So before entering into that, I want to share some history. So India's oldest coal mine is the Raniganj coalfield. It has been producing coal mines since 1774. In 1975, Raniganj was nationalized and placed under the control of the Eastern Coalfield Limited, a Coal India subsidiary. So many of the historic mines have been abandoned because the coal deposits have been exhausted over many years of mining. The mining is actually filled with water and developed into peat lakes. So here we can see I am collecting samples from a abundant peat lake of Raniganj coal. So coming to the methodology part, this is the my study site. This is the Damalia old lake. In this slide we can see the latitude and longitude. And this is the Damalia new pit lake, which is newly formed about 2021 around. So my aims and objectives of the work is to eliminate the pit lake water on the sustainable development of tribal people, production of biogas and compost from hydrominating plants, and creating entrepreneurship for alternative livelihood of tribal people by involving them in above mentioned process. So this is the polluted lake of Tanki and Swatch. It will have been abandoned. So the main purpose the hydrotherapy and the process of hydromediation involved the hydro extraction, hydrodegradation, hydrophiltration, phytopolarization. So these are the areas by which we can hydrocate the polluted peat lakes with the help of aquatic fluids.
So in case of sustainable development, illegal government benefits due to is available of so the tribal people are mainly involved in the mining part. So this is a very danger. So polluted water used in the pipelification are have been sold here. So there are several types of plants which are used for this purpose. So we can see the initial stage and the final stage. The both of the aquatic plant are very different. We can see the result in the initial stage and the final stage. So there are some macrophytes used for the phytoremediation. So I have mentioned three of them. The first one is the water has the scientific name is Econia species. The local people of the Jharkhand call it as a Jabalpur. Next one is the aerobic conduit. The scientific name of that is the Monopodia hastata. The local people of Jharkhand call that as a Lokia. And next one is the elephant grass. The scientific name of elephant grass is the Typha dominiensis. The local people of Jharkhand call it as a Patera. So status of the phytonutrient water by the floating plants, excess nitrate, sulfate, iodine, pH of the abundant peatland also dramatically decreased. So we can see the comparison to the untreated eutrophic water. Untreated eutrophic water had considerably lower quantity of the pollutants at great quantity, great degree of. So why we are selecting this phytonutrient? So these plants have the specific characteristics, like they have native growth and quick growth rate, high biomass yield, uptake of a large amount of heavy metals, ability to transport metals above ground parts of the plant. So we can use the phytonutrient aquatic plant for the production of biogas and the production of the farming benefits. So here we can see a diagrammatic view of a biogas plant, how a biogas produced. So we have seen that the water has been, which are untreated, it was activated to produce biogas. But if we treat the water has in, we can enhance the biogas production in 14 days. So we have the first chamber containing water content, salading, water has in contains solid, and the gas is produced and through the pipe the gas is producing to the second chamber. Here the gas is entering and the water is present. So a vacuum is created. So that which amount of gas is producing in the and entering in the second chamber is transferred to the third chamber. So by measuring the amount of water, we can easily calculate the amount of gas producing the third chamber. So here is the digester of the biogas, which contains an inlet portion, and this is the gas chamber, and this is the outlet portion. So the outlet portion contains a pipe which enters in the chamber that has water. So which amount of how amount of gas is producing, so the same amount of water is releasing in the pump. So by measuring the water content of the tub, we can easily calculate the amount of biogas. So coming to the verticompost portion, here we have set up a structure along with many chambers where verticompost producing. So it mainly organic waste broken down by the microorganisms at the worms in order to create a stable natural vermicompost. We have used water hyacinth in this process. So how the vermicompost are produced? So Xenia petata is a worm which treat the material and produce vermicompost. So we have a chart showing that if the worm works and if worm does not work, what will be the result regarding to the nitrogen, phosphorus, potassium, and the organic carbon, and the carbon and nitrogen ratio. So we can see if the
we have introduced the work, we have better amount of nitrogen, phosphorus, potassium, and organic carbon. So after 110 days, we have seen that the uncompost produced from water has have a great effect on the growth of a plant. Here we have seen nasty plant have a beautiful growth using the vermicompost without any side effects. So how we can develop entrepreneurship for travel people regarding this process? So the by process of fertilization, biogas, and vermicompost production, we need a lot of manpower. So involving tribal people in this process will create entrepreneurs, resulting in their sustainable growth and development. Instead of their working purpose in the coal mine area. So I would like to thank my guide, Dr. Dipandu Sah, Assistant Professor, Department of Botany, Center for Advanced Study, University of Part 1, West Bengal, India. I'd like to thank Sahibganj College, Jharkhand, for arranging this such kind of beautiful city and Social Science and Management Welfare Association. All my lab mates, Department of Botany, Center for Advanced Study, the University of Part 1, West Bengal, India. My family members, and all my Kerala. Thank you. So I would like to request if you have any suggestion and queries. Thank you, Kushal. Sir, I'm Nazir. Sorry, Nazir. Thank you, Nazir, for this paper. And if there are any questions, then we can present it to Nazir. Okay. Yes, Pallavi ma'am. Yeah, good afternoon, Mr. Nazir. It was a good presentation. So whenever it comes to phytoremediation, there is a question, and I think due to network issues, I missed that point in your slides. So I would like to know, once these plants are sequestering all the pollutants in their biomass, so how do we take care of that biomass? So they are accumulating the biomass, but they can, by the process of purification and depolarization, they are emitting the maximum of the materials. So there is a ratio according to their biomass and the pollutant they are absorbing. So much amount of pollutant they are absorbing from water, and they are reducing by the process of depolarization. And which amount of water they have retained, that portion we are taking that in the vermicompost and the biogas production. So that's the importance by which we can manage the pollutants. Okay, so that's one way of it. And I was especially asking about heavy metals because they cannot be modified in any way. So once the plant absorbs those things, what to do with that plant body or the biomass, which is having a lot of heavy metal accumulation in it. So anyway, it was good, and you can continue to work on this. Yes, the plant will absorb the heavy metals, and they are, by the process of the vermicompost production and the biogas production, they will be diluted in the further food chain process. So we are not consuming the fertilizer water, but we can manage the water for the domestic use and the irrigation and agriculture purposes. So that is a better way to fix the heavy metals by producing vermicompost and the biogas. Okay. Okay, Thank sir, you, got it. Nazir. Thank you. Okay, thank you, sir. Thank you. Right Sami now, Victor, sir. Sonjaria madam, Professor Sami Victor, Dr. sir. Brajesh ji. जी, Professor Dr. Sona Jhalia ma'am already joined, Honorable ex-Vice Chancellor. Yes. Next, Yes. Sona ma'am. So right now we have Professor Dr. Sonajaria Means joining us.
She was the ex-VC of Sidhukanam University. And I'd like to invite Madam to share her thoughts with us regarding this two-day conference on tribal development. Professor Dr. Sona Jharia Minj from Jawaharlal Nehru University. जुतो को जोहार। जोहार मैडम। जोहार मैडम। जोहार मैम। जोहार जोहार। आज जोहार मैडम। जोहार जोहार। आज का ये दिन जो इंटरनेशनल डे फॉर वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स के नाम से जाना जाता है, विच जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा डिक्लेयर किया गया है कि ये दिन इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल्स। तो इस दिन में साहिबगंज कॉलेज के द्वारा एक बहुत ही अच्छा 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन है। मुझे मेरी ओर से सबको, बहुत ही आयोजकों को और पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि बोला जाता है कि इंडिजिनस पीपल्स, हाँ, ये कम से कम हमारे भारत में एक थोड़ा सा विवादित शब्द है, और इसलिए ओरिजिनल हैबिटेंट्स ऑफ इंडिया अपने आप को इसलिए आदिवासी बोलते हैं, और हम इंडिया भारत में आदिवासी शब्द का भी इस्तेमाल होता है ताकि हम उसके साथ अपने को आइडेंटिफाई कर सकें, क्योंकि भारत जो विविधताओं का देश है और इतनी विविधता है, और समय से कई हजार साल से ही के पहले से ही यहाँ इतने लोगों का आना हुआ है कि जैसे ये लगता है कि एक प्लेटफॉर्म है, रेलवे प्लेटफॉर्म, जिसमें लोग आते ही जाते हैं पर ट्रेन छूटती नहीं यहाँ पर। सो अल्टीमेटली इट अपीयर्स टू बी दैट it's not appears, what has resulted is historical process से क्या उभर कर आया है कि भारत विविधताओं का देश हो गया है। और जैसा कि माना भी जाता है कि पहले जितने भी लोग आए, चाहे तो एशिया के उधर से या फिर हमारे ईस्ट की ओर से आए होंगे, जहीं से भी आए होंगे लोग, और उनका यहाँ वास हो गया। बट जब ब्रिटिश यहाँ आए उस समय वो कंफ्यूज हो गए कि उनको कहीं यहाँ यूनिफॉर्मिटी नहीं मिल रही थी, और इतनी विविधता थी, इतनी डाइवर्सिटी थी कि उनको इसको एक कॉमन ये नाम देने में बहुत मुश्किल हो रहा था। परंतु चाहे जो, क्योंकि किसी भी एस्पेक्ट को देखिए, भाषा के एस्पेक्ट को देखिए, पहरावे के एस्पेक्ट को देखिए, फीचर्स, फिजिकल फीचर्स को देखिए, खान पान को देखिए, तो ये एकदम फेडरेशन ऑफ मेनी नेशंस की तरह उनको लग रहा था। परंतु जो भी हो, ये एक लैंड मास हमारा जो है ट्रायंगुलर, जो ये में जाता है, मतलब पेनिनसुला है, और उसके ऊपर हिमालय है, ताकि उधर से भी उत्तर से एक वो एक मतलब इसकी प्रोटेक्टेड वॉल की तरह ये होता है। और इस तरह से वैसे तो अच्छे से हमारा ये पेनिनसुला लॉक्ड है, पर और इसीलिए शायद हो सकता है लोगों का केवल आना हुआ और जाना नहीं हुआ। बट इन व्हाट हैज रिजल्टेड इज कि हमारा देश विविधताओं का देश है, और इसीलिए आज की तारीख में भी जो 8.6% आबादी हमारे देश की है, उसमें भी जितने भी आदिवासी हैं उनमें भी बहुत विविधता है। एंड देयरफॉर हमारी संस्कृति जो बहुत ही डाइवर्स है, उसके बावजूद आदिवासी संस्कृति के नाम से और भारत के आदिवासी संस्कृति के नाम से
भारत के बाहर भी उसको उजागर किया जाता है. But I would like to draw the attention of to the theme of International Day of the World's Indigenous Peoples 2023. और ये बहुत ही pertinent और रोचक और important theme है, जो कि है the indigenous youth as agents of change for self-determination. सेल्फ डिटर्मिनेशन वैसे तो उसकी व्याख्या बहुत तरीके से की जा सकती है, और जितना हम उसके अंदर डीप डाइव करेंगे उतना वो कॉम्प्लेक्स होता जाता है, क्योंकि हमारा देश विविध केवल नहीं है, कॉम्प्लेक्स भी है, और विविधताओं के अनुसार कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है. और इसीलिए जब हम सेल्फ डिटर्मिनेशन जैसे शब्दों के साथ सोशल साइंस के पर्सपेक्टिव से डील करने की कोशिश करें तो हमारे लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो सकता है. परंतु इस वर्ष के जो 2023 के सब थीम्स हैं, यदि उनको देखा जाए तो मुझे लगता है कॉम्प्लेक्सिटी हमारे देश में, उसको कॉम्प्लेक्सिटी के क्वेश्चन को डील करने के लिए बहुत ही अच्छी बात है. जब जो पहला सब थीम है क्लाइमेट एक्शन एंड ग्रीन ट्रांजिशन, ये एक जो मुद्दा है क्लाइमेट चेंज का, उसके लिए यदि आदिवासी यूथ हमारे देश में, आदिवासी युवा युवतियां हमारे देश के अपने अपने ही कल्चर के, अपनी अपनी संस्कृतियों में, मेरा उस दिन में बिंदास से जाए ना, टेंशन कैन पीपल बी म्यूटेड हु आर नॉट स्पीकिंग? एडमिन आप उनको म्यूट कर सकते हैं. ओके, हेलो. Yes, ma'am. Please continue. Somehow I got minimized. Okay. Yeah. So जो पहला सब थीम है क्लाइमेट एक्शन एंड ग्रीन ट्रांजिशन, मुझे लगता है कि आदिवासी यूथ को चेंज ऑफ एजेंट ऑफ चेंज हमारे देश में बन सकने के लिए ये बहुत ही अच्छा अवसर है. मेरे ख्याल से जितने हमारे आदिवासी युवा युवतियां अभी भी अपनी संस्कृति की गोद में हैं, जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो अपने माहौल से, अपने अकड़ुख लोगों के माहौल से मैं थोड़ा दूर हूँ और दिल्ली में हूँ, परंतु मैं संताल परगना को इसीलिए एक बहुत ही सुहाना लैंडमार्क मानती हूँ या जगह मानती हूँ, क्योंकि संताल लोगों के कारण उस जगह का नामकरण हुआ है. और ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे संताल परगना, तो इसलिए उन सभी लोगों के लिए जो संताल हैं और संताल नहीं भी हैं, परंतु संताल लोगों के साथ कम से कम 1 या 2 पीढ़ी आप लोगों का रहना बसना हुआ है, तो सभी लोगों के लिए मैं एक ये चैलेंज देना चाहती हूँ. जैसे मैं somebody is not yet muted. सबके लिए मैं चैलेंज देना चाहती हूँ, और जैसा मैं कह रही थी कि जब मैं वाइस चांसलर थी तब भी मैं होमवर्क देकर छोड़ती थी, तो इस बार भी मैं वही इसी तरह की प्रक्रिया को अपनाते हुए मैं ये बोलना चाहूंगी कि जितने हमारे संताल युवा युवतियां हैं और उनके मित्र हैं जो कि कम से कम 1 या 2 पीढ़ी से साथ में रहना बसना कर रहे हैं, अभी तक संताल लोगों की या दूसरी जगह भी, जब मुझे लगता है अभी काफी लोग इसमें जुड़े हुए हैं 80 से ऊपर, और जितने संताल नहीं भी हैं परंतु दूसरे ट्राइब से हैं, दूसरे जनजातियों से हैं, हम अपनी अपनी संस्कृति में भी इस बात को देखते हैं कि ग्रीन
या हरियाली और हरा भरा रहना हमारा और रखना अपने वातावरण में कितना जरूरी है, और उसके बिना हमारी जिंदगी है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा लगता है। और इसलिए क्लाइमेट चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते, परंतु उसमें उसकी जो चेंज हो रही है उसकी वेलोसिटी को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं यदि पूरे पूरे वर्ल्ड के आदिवासी लोग या हमारे देश के आदिवासी लोगों की जो संस्कृति में प्रकृति के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन की का जो उदाहरण माना जाता है, उसको उन सबको थोड़ा उजागर करके उनके प्रति हम सम्मान करते हुए और प्रकृति को उस तरह से माने, क्योंकि हम प्रकृति पर निर्भर हैं, प्रकृति हम पर निर्भर नहीं है। हम हमेशा बोलते हैं धरती माता या फिर भारत माता, पर इसी धरती से और प्रकृति से हमें वो सब मिलता है जो हमें प्रतिदिन श्वास लेने से लेके अपने जीवन को खुशहाली के साथ जीने तक के लिए हमें जिन चीजों की आवश्यकता है वो हमें प्रकृति से मिलती है। और इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी कि क्लाइमेट एक्शन और ग्रीन ट्रांजिशन के योद्धा बन सकें, और विशेष करके अभी साहिबगंज कॉलेज ने ये सेमिनार कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है। आप निर्णय लें कि किस तरह से ग्रीन ट्रांजिशन या क्लाइमेट एक्शन के कुछ ठोस एक्शन कॉलेज के स्टूडेंट्स के द्वारा, और आज जितने टीचर्स पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उनके द्वारा अपने स्टूडेंट्स में इन सबको इनकलकेट किया जा सके, ताकि वाकई जो चेंज एजेंट बनने के लिए जो आह्वान है इस साल के थीम के द्वारा उसको कर सकेंगे। दूसरा सब थीम है मोबिलाइजिंग फॉर जस्टिस। हम इर्द गिर्द तरह तरह की डिप्राइवेशन की बातों को देखते हैं कि, और किसी और को डिप्राइव क्यों किया जाता है? क्योंकि हम इतने स्वार्थी हैं। और मुझे लगता है कि इनजस्टिस वही स्वार्थ का खेल है, और यदि जस्टिस होना है तो स्वार्थ को गिव अप करने का एक निर्णय की आवश्यकता है, ताकि सभी लोग अपने हिस्से का तो लें पर किसी दूसरे का हिस्से का ना लें, जिससे जस्टिस हो सके, और जिसके द्वारा स्वार्थ को या अपनी बेसिकली स्वार्थ को ही गिव अप करने से मुझे लगता है जस्टिस का एक कदम तो हर एक के द्वारा भी लिया जा सकेगा। और इसलिए जैसे हमने इस साल एडमिशंस के भी संबंध में देखा कि CUET के एग्जाम के लिए को जब इंट्रोड्यूस किया गया, तब हमारे क्षेत्र के तो मैं अभी भी हमारे बोलती हूँ क्योंकि मुझे लगता है सिद्धू कानू से अलग हुए मुझे केवल 2 ही महीने हुए हैं परंतु पूरा प्रांत तो मैं चूंकि वहां की हूँ इसलिए मेरे लिए पूरा प्रदेश ही है। पर हमारे प्रदेश के कितने छात्र छात्राओं को CUET में भाग लेने में मुश्किल हुई या वो दे ही नहीं पाए। तो ये भी इस तरह के निर्णय जब ले लिए जाते हैं और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का कोई एलिमेंट नहीं आता है तो वो एक अन्याय का ही उदाहरण बन जाता है या इनजस्टिस का उदाहरण बन जाता है। परंतु वो फ्लेक्सिबिलिटी का एलिमेंट यदि डाला जाए तो वो जस्टिस को मोबिलाइज करने का एक उदाहरण बन जाता है। मेरी गुजारिश रहेगी आप सभी अपने इर्द गिर्द देखें कि कहाँ, ये जरूरी नहीं है कि मतलब किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी पर ही इनजस्टिस की बात है। नहीं, हम संताल परगना में और झारखंड में हमसे बेहतर कौन विटनेस है कि अपने गेन या स्वार्थ के लिए प्रकृति के ऊपर इनजस्टिस की जा रही है ना। तो प्रकृति के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उसके लिए भी कदम उठाना मोबिलाइजिंग जस्टिस हो सकता है। और इससे जो इसके लिए भी क्लू या सूत्र कहाँ से आ सकता है? इसका क्लू आएगा जो
आदिवासियों का प्रकृति के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन है, पूरे इकोसिस्टम के साथ जो सिम्बायोटिक रिलेशन है, उसके एलिमेंट्स को समझकर जो एक रेस्पेक्ट के साथ, जैसे मुझे अभी अभी पता नहीं आप लोग वहां धान की रोपनी हो रही है कि नहीं, आदिवासियों का एक ये ट्रेडिशन है और प्रकृति को सम्मान देने का एक तरीका है कि एक ही प्रकार का धान एक हर साल उसी खेत में नहीं लगाया जाता है। और उसमें ये होता है कि परिवार के पास एक से ज्यादा प्रकार के धान के बीज होते हैं और उनको बारी बारी से लगाया जाता था, ताकि अपने खेत की उर्वरा शक्ति को एकदम हमेशा एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा रहा है। तो ये सब क्या, ये प्रक्रियाएं ना आदिवासियों के सिंपल होने, नाइव होने का उदाहरण नहीं है। ये मॉडल्स ऑफ कंजर्वेशन है, ये मॉडल्स ऑफ प्रिजर्वेशन है, प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल वेराइटीज। और आदिवासियों का जो फूड सिस्टम है उसको देखेंगे कि जंगलों से, अपने इर्द गिर्द के पेड़ पौधों से उन कई एक साग को हम रखते हैं, इनको सुखा कर भी देते, मेडिकल साइंस या मेडिकल साइंस नहीं परंतु जो न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के स्टूडेंट्स रहे हैं उन्होंने प्रूव किया है कि जो हम साग सुखा कर रखते हैं ताकि जब सब्जियां नहीं मिलती हैं उस समय खाएं, क्योंकि वो उस समय जब कुछ अवेलेबल नहीं है उस समय उसको खाने के लिए नहीं, उस ये डाइटिशियंस और न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के स्टूडेंट्स के द्वारा या उस ब्रांच के द्वारा सिद्ध किया गया है कि उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं खत्म होता। और इसलिए आज हमारे देश से जो मुनगा या मोरिंगा या और जो भी शब्द इस्तेमाल किया जाता है हम सब जानते हैं, उसकी पत्तियों को सुखाकर पाउडर बनाकर एक्सपोर्ट करना और अमेज़न के द्वारा यहाँ वहाँ उपलब्ध कराना की प्रक्रिया हो रही है। तो ये, और इसका मतलब ये नहीं कि हम ये मुनगा या मोरिंगा की सभी पत्तियों को निकाल देते हैं, है ना। तरीके होते हैं कि कितना एक पेड़ से कब और कितना हम निकालेंगे, ये नहीं कि पूरे पेड़ को ही काटा जा रहा है, क्योंकि वो क्रम हमेशा साल ब साल, और हो सकता है साल में कितनी भी बार वो अपनी उनसे हम पत्तियों को निकाल सकें। और इसलिए जो इनजस्टिस प्रकृति के साथ भी हो रही है जाने अनजाने अपने स्वार्थ के लिए, तो उस जगह भी स्वार्थ को यदि गिव अप किया जाए तो जस्टिस एस्टैब्लिश हो सकती है प्रकृति के साथ भी। और इसमें आदिवासी संस्कृति के तहत जो चीजों को ये लोग तो ऐसे ही करते हैं, नहीं, देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट, और उस साइंस को उभार कर लाना हम आदिवासी स्टूडेंट्स और टीचर्स का भी काम है कि वहां कौन सा साइंस है उसको प्रस्तुत किया जाए साइंटिफिक तरीके से, ताकि आदिवासियों को बहुत ही सिंपल, बहुत ही सौम्य, बहुत ही संतुष्ट, बहुत कम में ही संतुष्ट रहते हैं, परंतु अनसिविलाइज्ड हैं, अनकूथ हैं, टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट हैं। अरे नहीं नहीं, साइंस इतना हमारी संस्कृति में है कि उसको की व्याख्या करना ही रह गया है अदरवाइज। और इसीलिए आज की तारीख में जब क्लाइमेट एक्शन के लिए या क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए इंडिजिनस नॉलेज या ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स की खोज हो रही है, और उस आज मैंने किसी एक पोस्टर में देखा इंडिजिनस नॉलेज, वॉइस एंड विजडम, पर मैं इस क्रम को चेंज करना चाहूंगी, इंडिजिनस वॉइस, नॉलेज एंड विजडम, क्योंकि वॉइस भी इंडिजिनस होना है, वॉइस भी आदिवासी का होना है, क्योंकि आदिवासी को ही अपने बारे, अपनी चीजों को सामने लाया जाएगा, तो उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए हमारे अब समाज में अभी भी जो बुजुर्ग लोग हैं वो ऑथेंटिकेट कर पाएंगे। और साइंटिफिकली तो जो हम लोगों ने साइंस पढ़ा है कर ही सकते हैं उन प्रक्रियाओं को। मेरा तीसरा बिंदु जो कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा निर्धारित है, इंटरजेनरेशनल कनेक्शन। हम हमेशा युवाओं को
दो जनरेशन के बीच की कड़ी मानते हैं। और मैं सोचती हूँ भारत में अभी जो युवा हैं, और हम जानते हैं कि हम एवरेज एज के कारण, औसत एज के कारण हमारे देश को बहुत ही यंग और यंग लोगों का देश माना जाता है। और इसीलिए सबकी यूनाइटेड नेशंस ने ये थीम रखा है। उसके साथ साथ मुझे भी हमारे देश के लिए, हमारे आदिवासी समाजों के लिए ये आशा होती है कि जब हमारे समाजों में और हमारे देश में यंग पॉपुलेशन इतना ज्यादा है दूसरे देशों की तुलना में, तो ये जो इंटरजेनरेशनल कनेक्शन की एक केवल कड़ी नहीं है, परंतु एक जनरेशन से अपने बाद की जनरेशन तक सभी बातों को लेकर जाने, विशेष करके जो जैसे मैंने बोला वॉइस, नॉलेज एंड सिस्टम ऑफ आदिवासी है ना, उसको बरकरार रखते हुए जिस नॉलेज फ्रेमवर्क के द्वारा, मतलब या साइंटिफिक, आज की तारीख में साइंटिफिक फ्रेमवर्क की बात होती है ना, तो उस फ्रेमवर्क में प्रस्तुत कर सकने के लिए भी हमारे लिए अभी से ज्यादा अच्छा मौका नहीं मिल सकेगा। और इसलिए मैं अपनी इन बातों को आप सबों को बधाई देते हुए, और अभी जैसे मैं थोड़ा बहुत इससे पहले के प्रेजेंटेशन को भी सुन रही थी कि हमारे इर्द गिर्द और उस बहुत डीप जंगलों में नहीं, इर्द गिर्द वो वाटर एसेंस और वो सबकी बात कर रहे थे कि उनकी जो साइंटिफिक प्रॉपर्टी है उन सब के साथ, और उनको इससे पहले जो सवाल भी किया गया था कि इतने हेवी मेटल्स इत्यादि का डिपॉजिट्स उसमें हो रहा है, तो क्या उससे हार्म हो सकता है, जितनी चीजें उनसे बन सकती हैं, या क्या उनके क्वालिटी में, उनके प्रॉपर्टी में डिग्रेडेशन आएगा, तो क्या करना चाहिए। तो इन सभी बातों को हमेशा रिसर्च करते हुए, डिबेट करते हुए कॉन्शियस डिसीजन ले सकने की भी जिम्मेवारी हमारे युवाओं के कंधों पर है। और मैं बधाई देते हुए फिर से साहिबगंज कॉलेज ही नहीं, पूरे S.K.M को भी बधाई देना चाहूंगी आज के इस शुभ दिन में कि आप ने इस तरह से, और क्योंकि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में तो वैचारिक उत्सव ही होना चाहिए, और कॉन्फ्रेंस या सेमिनार्स वो वैचारिक उत्सव है, बौद्धिक उत्सव हैं, जिनके द्वारा हम आज पिछले तथ्यों को आज की परिस्थितियों को जोड़ते हुए भविष्य की दिशा को तय करते हैं, ताकि दशा में बदलाव हो और दशा अच्छी ही हो, बेहतर ही हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों को बधाई देते हुए, सभी स्पीकर्स, सभी पार्टिसिपेंट्स, सबको मैं बधाई देते हुए, और आज इसके हमारे पेट्रन डॉक्टर बिमल प्रसाद सिंह, शायद वो भी समय पर जुड़े रहे होंगे, और यूनिवर्सिटी के दूसरे भी ऑफिसर्स और इम्पोर्टेंट लोग यदि जुड़े थे या अभी भी जुड़े हुए हों, तो सबको मैं जोहार बोलते हुए आप सबों को आइमा सरहाव बोलना चाहूंगी। आइमा सरहाव। आपको दिल से धन्यवाद। Thank you, ma'am. Thank you so much for joining us today. It is a matter of great privilege that we are sharing the same space on this very special day, and we'll try to inculcate all that you have called for. Thank you so much, madam. I'd like to open the panel for discussion, and if we have any other paper presenters, then please present your papers. I'll continue to read out the names. Dr. Ramjay Naik. Dr. Ramjay Naik. जी जोहार सर। जोहार जोहार सर, प्लीज प्रेजेंट योर पेपर। जी सर, सबसे पहले आज विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी जितने भी उपस्थित सभी गुरुजनों को मैं डॉक्टर रामजय नायक, सहायक प्राध्यापक जैन कॉलेज धुरवा, रांची विश्वविद्यालय रांची कोर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं। आज का जो विषय है मेरा, शिक्षा जगत में जनजातियों के बढ़ते कदम। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जनजाति किसे कहेंगे, जनजाति का क्या तात्पर्य है, जनजाति से आप क्या समझते हैं। जनजाति ऐसे समाज, ऐसे सभ्य जाति का नाम है जिनकी जन्म प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। वे जन्म से लेकर के
जन्म से लेकर के प्रकृति के पोषक होते हैं, प्रकृति की रक्षा करने वाले होते हैं। ऐसे समाज को हम जनजाति के नाम से जानते हैं। तो उसी के संदर्भ में आज हम झारखंड के संदर्भ में बात करने वाले हैं कि झारखंड में रहने वाले जनजातियों के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या योगदान है। ऐसे तो कहा जाए तो जनजाति झारखंड के क्षेत्र में खेल जगत में हॉकी खिलाड़ी निकी प्रधान, सावित्री पूर्ति, जयपाल सिंह मुंडा, जिन्होंने 1928 में गोल्ड मेडल भारत सरकार के द्वारा कप्तानी के तौर पर ये हासिल हुए थे। मंत्री के क्षेत्र में अगर कहा जाए तो माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू, राज्यसभा सदस्य महुआ मांझी, रामेश्वर उरांव, वित्त मंत्री झारखंड सरकार हैं। और शिक्षा के जगत में कहा जाए तो डॉक्टर कार्तिक उरांव, रोज क्रिकेटा, वंदना केटे, जसविंता क्रिकेटा, जयपाल सिंह मुंडा, डॉक्टर कुमारी बासंती और डॉक्टर पद्मश्री रामदयाल मुंडा। आंदोलन के क्षेत्र में कहा जाए तो यहाँ के जनजातियों की बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें हम देख सकते हैं सर्वप्रथम बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, शेख भिखारी, तिलका मांझी, टाना भगत जिन्होंने असहयोग आंदोलन में 400 रुपया महात्मा गांधी को सहयोग देकर के उन्होंने भूमिका निभाई थी। नीलांबर पीताम्बर और फूलो झानो। संगीत के क्षेत्र में अभी कहा जाए तो जनजातीय महिला जो स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं, जैसे झारखंड रत्न उन्हें सम्मान दिया गया है पार्वती मुंडू मैम को, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज का ये आज हम ऐसे लेखिका का हम बात करेंगे जैसे आप साहित्य के क्षेत्र में अब जुड़े उन्हें पाए होंगे। तो सबसे पहले हम कुछ शब्द हैं उनके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं। वीडियो बंद करके पढ़ सकते हैं सर? जी जी, ओके। डॉक्टर रोज क्रिकेटा ने विदेश यात्रा भी किए हैं। इंडियनियस डिबेट द्वारा एक उद्घाटन समारोह के दौरान एशिया का प्रतिनिधित्व करने जर्मनी गए। झारखंडी लेखन में जिन रचनाओं को सर्वाधिक हासिल हुई है उनमें आप भी हैं। डॉक्टर रोज क्रिकेटा मातृभाषा खड़िया के साथ साथ हिंदी भाषा साहित्य को समृद्ध बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। झारखंड की आदि जीविका और समाज के महत्वपूर्ण सवालों को सृजनशील अभिव्यक्ति देने के साथ ही जन आंदोलनों को बौद्धिक नेतृत्व प्रदान करने का तथा संघर्ष राह में आप अग्रिम पंक्ति में रही हैं। डॉक्टर रोज क्रिकेटा को खड़िया भाषा साहित्य की बहुत अधिक जानकारी थी। डॉक्टर रोज क्रिकेटा 2012 ईस्वी में यूनिसेफ झारखंड द्वारा बच्चों के लिए मेरी दुनिया मेरी भाषा चित्र शब्दकोश का निर्माण भी किए हैं। 2015-16 को यूनिसेफ झारखंड एवं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा कक्षा पहला के अनिर्दा श्रेणी तथा खंडा 1 और एबो गणित खंडा 1 तथा कक्षा 2 अनिर्दा श्रेणी खड़िया भाषा के पाठ्य पुस्तक निर्माण में 2016 में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्हें प्रमुख सम्मान भी मिला है, जैसे प्रभात खबर के द्वारा सम्मान, जन जागरण, दैनिक जागरण सम्मान, एनजीओ द्वारा सम्मान, छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ द्वारा बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद सम्मान, राष्ट्रीय वीरांगना रानी दुर्गावती सम्मान, अयोध्या प्रसाद खत्री सम्मान। इनकी जो लेखन कार्य क्षेत्र हैं उनको हम देखते हैं प्रकाशित पुस्तकें हैं। खड़िया लोक कथा का साहित्यिक और सांस्कृतिक अध्ययन इनका ये शोध विषय है। प्रेमचंद की कहानियों का खड़िया अनुवाद है। सिंकोय लोदोय लेद्रो सुमाधि खड़िया कहानी है। खड़िया निबंध संग्रह, खड़िया गद पद संग्रह, जुझारदार खड़िया नाटक संग्रह है। पगा जोड़ी जोड़ी घाटोरे हिंदी संग्रह, सेम्भोर डकई खड़िया के लोक कथा, असीम गुरु 2010 ईस्वी में कविता संग्रह, बीरवार गमछा 2016 ईस्वी में कविता संग्रह। इसके अतिरिक्त विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में, दूरदर्शन तथा आकाशवाणी से भी सृजनात्मक विधाओं में हिंदी एवं खड़िया भाषाओं में सैकड़ों रचनाएं प्रकाशित एवं प्रसारित होती रहती है। डॉक्टर रोज क्रिकेटा आधी दुनिया पत्रिका संपादन
संपादन में जो स्त्रियों के शिक्षा पर कार्य करती हैं। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची से सेवानिवृत्त के स्वतंत्र लेखन एवं विभिन्न नागरिक संगठनों में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। दूसरे में है वंदना टेटे। खड़िया समाज के एक जाने माने लेखक एवं काव्यत्री वंदना टेटे का जन्म 13 सितंबर 1969 ईस्वी में सिमडेगा जिला के गर्जा पहाड़ टोली में हुआ था। इनकी सबसे पहली पुस्तक पुरखा लड़ाके का संपादन किए, जो झारखंड के अमर शहीदों के जीवन की संघर्ष के बारे में बहुत अच्छी तरह से लिखे गए हैं। दूसरी पुस्तक झारखंडी साहित्यकार एवं नए साहित्यकार सन 2011 ईस्वी को प्रकाश में आया, जो प्यारा क्रिकेटर फाउंडेशन द्वारा प्रकाश में आया। आपको बताते चले कि डॉक्टर वंदना टेटे डॉक्टर रोज क्रिकेटर की बेटी रही है और अपने माता से प्रभावित होकर ये अपने लेखनी कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े और अभी तक इन्होंने 14 पुस्तकों का ये लेखन प्रारंभ किया, जो सभी जितने भी पुस्तक हैं सभी पाठ्यक्रम के आधार पर बनाई गई है, जो सभी अभी कक्षा बीए और एमए में पढ़ाई हो रही है इनकी पुस्तक। पत्रिकाएं वंदना टेटे पत्रिकाओं के लेखन तथा संपादन करने में भी सक्रिय रही है। उनकी पहली पत्रिका ताना बाना जो 1995 ईस्वी में उदयपुर राजस्थान से प्रकाशित होने लगी। यह सामाजिक पत्रिका है जो आदिवासी बच्चों एवं महिला पर केंद्रित था। नागपुर में छपती थी। यह पत्रिका बहुत ही लोकप्रिय रही। मनोरंजन और सूचना के लिए यह पत्रिका बहुत अच्छी है। वंदना टेटे सामाजिक कार्य में भी सक्रिय रही है। 1995 ईस्वी में सेवा मंदिर उदय राजस्थान एनजीओ से जुड़कर 1 साल तक महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के अधिकार पर कार्य किए। महिला अधिकार समिति अजमेर से महिलाओं के अधिकार पर भी कार्य किए। उसके बाद महिला जागृति गोमिया से 1986 ईस्वी को महिलाओं के स्वास्थ्य एवं न्याय के अधिकार पर कार्य किए। इन्होंने एक नुक्कड़ नाटक भी लिखे हैं जो 1986 ईस्वी में इसका प्रकाशन में हुआ। महिलाओं को हक दिलाने के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य किए। झारखंड आंदोलन को चक्रधरपुर से सहयोग करते थे। सचकर्ता आंदोलन में 1991-92 में भारत ज्ञान विज्ञान समिति भारत सरकार से जुड़कर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से संस्कृति पर कार्य किए। इन्हें विभिन्न पुरस्कार से नवाजा भी गया है, जैसे पहला बेस्ट लेख पुरस्कार झारखंड सरकार 2010 ईस्वी में, दूसरे पुरस्कार भास्कर वुमेन पुरस्कार सम्मानित महिला उद्यमी के रूप में मिला, दैनिक जागरण से जागरण सम्मान मिला, लोअर एसोसिएशन से सम्मानित किया गया। अगले काव्यत्री हैं कुमारी बासंती एक नागपुरी के जाने माने कवि हैं, काव्यत्री हैं, लेखिका हैं, जिन्होंने जनजातीय क्षेत्रीय भाषा रांची विश्वविद्यालय रांची के अंतर्गत पूर्व विभागाध्यक्ष के रूप में भूमिका निभाई है। ये एक सिमडेगा क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो इनके लेखिका कार्य में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ये थी आज की प्रस्तुति सर। आप सभी को इतना ही बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जोहार। Thank you, sir. Thank you very much. Dr. Anju Kumari. Good afternoon to all. Sir, my paper is on educational development of scheduled tribe children in Jharkhand and overview. As we know that Jharkhand is one of the states of Indian Union which contributes about 8.2% of ST population to the total ST population of our country. The years of planning, budgetary allocation of funds, and numerous schemes have not been able to provide the basic of education to some of the tribal population of the Jharkhand. Consequently, ST children exhibit
low participation in education, and poor learning at all levels in some of the region. Education is one of the primary agents of the transformation toward the development of the children. Education is, in fact, an input not only for the economic development of tribes but also for the inner strength of the tribal communities, which help them in meeting the new challenges of life. My paper is to enlighten the various problems of tribes people related to education. First one is the medium of language. This is one of the most important problems, that the language is not provided to the students of the locals, like the regional language should be provided to them so that they can learn the basics of the education. And second one is the location of the village. As we know that the various people of the various tribes people live in the villages which is too far, and there is no provision of schools there, so there is problems to take education. And the third one is economic condition. The one of the most problem is the economic condition of the families, which create a problems to the children to take the education. And after that, one of the most important problem is the attitude of the parents. We have to change the attitude of the parents, and by the literacy campaign, we can change the attitude of the parents that education is too much important for the development of the children and their society also. And after that is the teacher related problem. It is one of the also important problems that there should be local children and female teachers appointed in the primary schools, so that the education system will change, and they all that the dropout of the children will also decrease, so that most of the students can take the basic education, means up to primary level education, to increase the literacy level. And last one is the lack of proper monitoring. The various provisions are provided by the Jharkhand government to increase the literacy rate of the tribe children, but there is, due to lack of proper monitoring, all the provisions are not getting to the deprived people. As ma'am has now said that we have to give up our स्वार्थ, हमें अपने स्वार्थ को छोड़ना होगा। यह एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि वैसे लोगों को सारी सुविधा मिलती जा रही है जो आगे बढ़े हुए हैं, और जो पीछे हैं ट्राइब्स पीपल, उनको वो सुविधा नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जैसा मैम ने कहा, जो जितना मिल रहा है उसको और अधिक लेना चाह रहे हैं, और जिसको नहीं मिल पा रहा है वो और पीछे रह गए। उसके लिए हम सबों को आगे बढ़कर एज ए एजुकेशनल फील्ड में हम लोग सभी लोग हैं, तो हमें यह जागरूकता सबों में लानी होगी कि ये जो अधिकार दिए गए हैं, वेरियस प्रोग्राम्स जो चलाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा टू एनरिच द एजुकेशनल डेवलपमेंट, टू इंक्रीज द लिटरेसी रेट ऑफ द ट्राइब्स चिल्ड्रेन, उन्हें आगे लाने के लिए जो कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए, इन पर उन सब का अधिकार है, उनको आगे लाया जाए। और इस तरह से हम क्या होगा, अपने झारखंड के जो लिटरेसी रेट है उसको आगे बढ़ा पाएंगे। मैम ने कहा कि जो ट्राइब्स पीपल है वो बहुत अधिक कह सकते हैं वो प्योर हार्ट वाले होते हैं, उनको जितना मिलता है वो उतना में ही संतुष्ट रहते हैं, और मैंने भी कई बार देखा है कि सच में वो लोग बहुत संतुष्ट होते हैं। तो यह अगर वो नहीं लड़ पा रहे तो हमें उनके लिए लड़ना चाहिए, और उनके एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए जो कार्य हम कर सकते हैं उसे हमें करना चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you. Next we will have Dr. Vishwanath Sa. Dr. Vishwanath Sa. Sir. Please present your paper, sir. सबसे पहले मैं डॉक्टर विश्वनाथ सा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसॉफी। वर्तमान में मैं अभी मॉडल कॉलेज पाकुड़ में प्रभारी प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ, जो सीधा कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका के अधीन आता है। तो मेरा विषय है कि झारखंड में जनजातीय विकास, चुनौतियां और समाधान।
सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि जनजाति कहते किसको हैं, आदिवासी कहते किसको हैं। तो आदिवासी अंग्रेजी के शब्द ट्राइब का रूपांतरण है। ट्राइब शब्द लैटिन भाषा के ट्राइबज से निकला है, जिसका अर्थ होता है 3 वर्ग। फिर भी इस शब्द का अर्थ अलग अलग पाया जाता है। रोमन के अनुसार यह एक राजनैतिक वर्ग है। ग्रीक में इसे भ्रातृय के समान अर्थ में लिया जाता है, जबकि आयरिश इतिहास के अनुसार यह शब्द परिवार या समुदाय का बोधक है। ऑक्सफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार एकाधिक परिवारों से बने परंपरागत समाज का वह वर्ग जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषिक और रक्त के स्तर पर बंधे हों और क्षेत्रीय नेतृत्व के अधीन रहते आए हों, उन्हें हम लोग आदिवासी कहते हैं। इस आदिवासी शब्द की एक बड़ी विशेषता यह है कि जैसा कि इन्होंने बताया है, डॉक्टर D.N. मजुमदार ने, कि भारतीय परिवेश में जनजाति का अर्थ है कि परिवारों या परिवार समूहों का एक ऐसा सामान्य नाम जो एक ही भूभाग में निवास करते हैं, एक ही भाषा बोलते हैं तथा विवाह एवं उद्योग धंधों में एक ही प्रकार की बातों को निषिद्ध मानते हैं। एक दूसरे के साथ व्यवहार के संबंध में भी इन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कुछ निश्चित नियम बनाए हुए हैं। सारी परिभाषाओं का सार यह है कि आदिवासी एक ऐसा समुदाय है जो अरण्यवासी हैं। वे सभ्यता की दौड़ में पिछड़े हुए हैं। वे एक निश्चित भूभाग में रहते हैं। ये सामुदायिक भावना के प्रबल समर्थक हैं। ये विलक्षण रीति रिवाजों के पोषक हैं। ये लिपि रहित भाषा भाषी हैं। हालांकि अब उनके लिए लिपि का विकास किया जा रहा है, जैसे संथाल भाषा में है तो ओल्ड-चिकी लिपि को डेवलप किया जा रहा है। और ये पूर्णतः पुरातन प्रेमी हैं तथा नई जीवन पद्धति को स्वीकारने के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। इनकी संस्कृति उच्चतर मानववादी गुणों से संपन्न है और इनमें से न तो सामाजिक भेदभाव और न ही लैंगिक भेदभाव विद्यमान है। ये विशुद्ध प्रकृतिवादी और यथार्थवादी हैं तथा इनका जीवन चक्र धार्मिक प्रवृत्ति और विश्वास पर आधारित है। जनजाति की बात समझ लेने के बाद मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। आज विश्व आदिवासी दिवस है और विश्व आदिवासी दिवस मुख्य रूप से आदिवासी को फोकस करके कि उनके विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको हम कैसे आगे ले जा सकते हैं, मुख्य धारा में कैसे शामिल कर सकते हैं, इस बात से संबंधित है। तो जनजातीय जनसंख्या के आधार पर अफ्रीका के बाद आने वाला देश भारत है, जो विश्व की कुल आबादी का लगभग 6% है और भारत की कुल आबादी में जनजाति का प्रतिशत 2001 की जनगणना के अनुसार लगभग 8.08% है। हो सकता है अभी कुछ ज्यादा हो जाए। और झारखंड में की कुल जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 2,69,45,829 है और इसमें अनुसूचित जनजातियों की संख्या 70,87,068 है, जो कि कुल आबादी का लगभग 26.3% है। आबादी का 26.3%। लेकिन अगर हम पर कैपिटा इनकम से देखें या झारखंड के सकल घरेलू उत्पाद को देखें और उसमें से आदिवासियों के प्रतिशत को देखें तो आर्थिक दृष्टि से हम पाते हैं कि आर्थिक क्रियाकलापों में उनका योगदान बहुत कम है। और हम सब तरफ से देखेंगे, सभी तरीके का करेंगे। सबसे पहले देखें कि आर्थिक विकास पर कैपिटा इनकम के हिसाब से जनजातियों की आमदनी अन्य जातियों की तुलना में बहुत कम है। सामाजिक दृष्टिकोण से वे समाज से अलग थलग रह रहे हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से भले झारखंड में उनका कुछ उत्थान हुआ है, उन्हें न सिर्फ विधानसभा में पर्याप्त संख्या बल उपलब्ध है उनका, बल्कि उन्हें
आरक्षण के तहत पंचायतों में जो आरक्षण उपलब्ध कराया गया है उसके आधार से उन्हें राजनीतिक पदों पर अनेक अवसर प्राप्त हुए हैं और वे उनका भरपूर लाभ भी उठा रहे हैं। लेकिन जो सारे विकास का मूल है वो है शिक्षा, और एक अच्छी शिक्षा जब तक नहीं मिलती किसी को, तब तक किसी भी प्रकार से किसी भी समाज के विकास को तेजी प्रदान नहीं की जा सकती, उन्हें तीव्र नहीं किया जा सकता। समस्याएं अनेक हैं और इसके लिए उपाय क्या है? तो सबसे पहला क्या है कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमें पंचायत स्तर पर 10+2 विद्यालयों की स्थापना करनी है और उन विद्यालयों में ऐसे कोर्स की पढ़ाई की जानी चाहिए जिससे औद्योगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। दूसरी बात, आर्थिक विकास के लिए जनजातीय गांवों के आसपास प्रति परिवार कम से कम 100 फलदार पेड़ लगाए जाएं और उनसे संबंधित प्रसंस्करण उद्योगों का प्रशिक्षण स्थानीय लोगों को उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि वे प्रकृति की गोद में रहते हैं, नदियों तालाबों झीलों के पास रहते हैं, तो नदियों को झीलों को पर छोटे छोटे बांध बनाकर मछली पालन का अवसर उपलब्ध कराया जा सकता है और उनसे जुड़ा प्रशिक्षण उन्हें प्रदान किया जाना चाहिए। वो हमारे जनजातीय बंधु जितने भी हैं उन्हें पशुपालन से भी विशेष लगाव है और उनके लिए पशुपालन और उससे जुड़े उद्योगों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन सारे प्रयासों का मूल मंत्र यही है कि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का अवसर प्रदान किया जाए। धन्यवाद। थैंक यू सर। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के लिए बुलाना चाहिए डॉक्टर प्रिया राव। प्रिया राव मैम। I think she left. Good afternoon, sir. Okay, ma'am. Please continue. Good afternoon. Good afternoon, sir. Yes, sir. Sir, I'll just take a minute to share the PPT. Sure, sure. Yes. Sir, is the PPT visible? Yes, ma'am. Yes. Good afternoon to one and all present in this forum, and I'm very thankful to the organizing secretary and the members involved in this 2 days international conference on tribal development. I, Dr. Priya Rao, Assistant Professor of Law Department, Pandit Ravi Shankar Shukla University, Raipur, is going to present a paper on bridging socio-economic gaps, the tribal development program in Chhattisgarh. As you all know, that Chhattisgarh is a state in central India and is renowned for its rich tribal heritage and diverse indigenous communities. The Tribal Development Program in Chhattisgarh is a comprehensive initiative aimed at uplifting and empowering these indigenous communities. The indigenous population in Chhattisgarh have historically faced marginalization and socioeconomic disparities. The government of Chhattisgarh recognized the need for inclusive growth and sustainable development for tribal communities, leading to implementation of the Tribal Development Program. This program is designed to provide equal access to education, healthcare, livelihood opportunities, and social empowerment for the tribal population. By bridging the gaps between tribal and non-tribal communities, the program aims to create a more equitable society where all the individuals can thrive through strategic partnership with the government agencies and the organizations in the program. It ensures effective and sustainable outcome. The Tribal Development Program in Chhattisgarh, it serves as a model for inclusive development, which also includes social justice, inspiring similar initiatives in the regions which has significant tribal population. In this PPT, I would like to highlight the transformative changes which have been taking place in the tribal development programs.
The tribal development program in Chhattisgarh was initiated basically to address the historical marginalization and socioeconomic disparities which have been faced by the tribal population over the years. Chhattisgarh is home of significant numbers of indigenous communities which are rich in cultural heritage. The tribal population have long experienced socioeconomic challenges, including limited access to education, healthcare, and livelihood opportunities. So the government has recognized these areas to foster the inclusive growth and sustainable development for these communities. This program aims to uplift and empower the tribal population by providing them the equal access of opportunity in different areas, including education, healthcare, and livelihood. It is a collaboration between the government agencies and the non-government agencies. So coming to the areas, the focus areas of the program, first is the education. The tribal children, they require quality education, and therefore the efforts have been made to establish school residential hostels in remote tribal areas of Chhattisgarh, like in Bastar, Dandakarian region. There is a lot of tribal schools which have been opened by the government and the hostels in order to reduce the dropout rate and enhance the enrollment rate. Also, there has been a lot of programs which have been initiated by the school education department. Even coming to the healthcare, the program recognizes the importance of providing accessible healthcare services to the tribal communities. Healthcare centers have been opened in different regions for ensuring the access to the basic medical facilities which tribal people, they have the right to get access to. Similarly, livelihood. The program focuses on promoting sustainable livelihood for tribal population. It includes initiative for skill development and vocational training, handicraft, forest-based industries, economic activities, in order to involve the youth in livelihood procedures. Social empowerment. The program undertakes initiative to strengthen the tribal governance system. It encourages community participation and preserve the indigenous culture and tradition. And efforts have been made to recognize and protect the tribal rights of the people. These focus areas are collectively, they will contribute to the holistic development and empowerment of tribal communities, aiming to create a more inclusive and equitable society in Chhattisgarh. The education initiatives, if I talk about, there have been special attention for the establishment of schools and residential hostels. Qualified trained teachers have been deployed. Programs have been made to make it more inclusive and culturally sensitive education to be imparted. Similarly, for the healthcare, basic medical facilities can be reached to the tribal population who are living in the remote areas, and unique healthcare needs for the tribal communities, the specialized care has been provided. Health camps have been organized, and the special focus is on the preventive healthcare measures like promoting vaccination drives, conducting health checkups to these people. By addressing the healthcare needs of tribal community, the program aims to improve the overall well-being and contribute to the long-term health and vitality of the indigenous population in Chhattisgarh. Coming to the livelihood and skill development, the program offers various initiatives to enhance the livelihood opportunities for the individuals and essential skills. The vocational training programs are conducted to impart the practical skills and knowledge, establishing the tribal individuals to engage in income-generating activities. The program also emphasizes in the sustainable agricultural development practices, promoting organic farming techniques to enhance the productivity. The government is working with the NGOs and other agencies, industry stakeholders, and this is basically done in order to have a success and viability of livelihood and skill development program in those regions. By empowering the tribal communities with marketable skills and sustainable livelihood option, the program aims to uplift the economic status and enhance the overall socio-economic well-being of the tribal population. Income generation and economic empowerment is also laid focus on in these programs. Specialized training programs are conducted to enhance the skills of the tribal individual in the traditional occupation, promoting efficiency and productivity. Financial assistance has also been provided to them along with the collaborative partnership with industries, government agencies, and other financial institutions. Regarding the social empowerment, significant aspect of tribal development program includes the strengthening of the tribal communities through self-governance so that they can preserve their cultural heritage.
Collaborative platforms and forums are also created to facilitate the community participation in the planning and implementation of these programs. Awareness programs on the tribal rights and entitlements are conducted. Efforts are being made to provide more free legal aid and to support the tribal individual communities, ensuring access to justice and so that they can be protected from the exploitation. The program aims to create more inclusive and equitable society with the tribal communities. Recognition and protection of tribal rights is also given a great emphasis in these programs because they work towards the recognition and protection of the land rights, ensuring tribal communities to have secure tenure over their ancestral lands and natural resources. Awareness programs are being conducted, advocacy, lobbying initiatives are undertaken, collaboration with the tribal organizations, civil society groups, legal experts, all of them are playing in order to create a more just and equitable society in the tribal community. So the overall impact and benefit, if I talk about in the end of my paper, the tribal development program in Chhattisgarh has made a significant impact on the lives of tribal communities, leading to various positive outcomes and benefits. Improved access to education, quality healthcare, livelihood and skill development initiatives are few of them, and the recognition and protection of tribal rights. The overall impact of the program has led to more inclusive and equitable society. Thank you so much. Thank you, sir. For this very informative paper. We'll move on to the next paper, which is Kushal Roy. Sir, this is Kushal Roy. Can I present? Yeah, please. Please present your paper. Kushal Roy. Sir, I will take a minute to share the screen. All right. Is my screen visible? No, not now. Sir, sorry for the interruptions. Sir, I am Satish Shubha, next presenter. Actually, my number is 7. Okay, we will have it after this, ma'am. Okay, sir. Thank you. Is it visible now? No, sir. No problem, sir. Direct. No. Yes. Is it visible now? Yes. Okay. Thank you. So let me start my section. Respected eminent personalities, organizers, and participants from each part of the world, according to the Indian Standard Time, a good afternoon to all of you. First of all, I would like to express my gratitude to the organizers for organizing this conference on such an important topic of tribal development. Mining and tribal people have a long history of deracination and bereavement from livelihood of the latter, especially in the state of Jharkhand and West Bengal. So, in this study, we have shown the impact of coal mining on tribal people with a reference to Raniganj field, and we have also suggested some ways to create entrepreneurship possibilities. At first, let's have a quick glance on some facts about the Raniganj coalfield serves as the place where the inception of mining took place in India during 18th century. In
In 1820, mining was regularized, and eminent Bengali personalities like Dwarkanath Tagore also bought collieries in Raniganj during 1835, being the first Indian to do so. And while I was reading about this study, I came across this photo. The photo grabbed my eye, and I could not hold myself from using it in my presentation. With that, now let us look at the status of the tribal people right from the inception of mining in Raniganj. The tribes which were usually involved in mining activities in Raniganj were the Santals and the Baurals, and who were earlier who were bereaved as the mining sites were discovered, and later they were hired as cheap laborers, as cheap labor was the need of the hour. And later they were always have been denied from their basic amenities, and thus their life was marginable. And during recent times, the scenario has however not changed. In certain reports in newspaper, there have been news reports about relocation of the tribes from the place where a new mine has been discovered. That is why there is an immediate need to suggest ways to uplift the socio-economic status of the tribal people. But first of all, let us understand about the formation of surface mine pit lakes in the coal fields through this flow chart. And the pit lakes are ultimately converted into pit lakes, and the causes of pit lake formation are raining, surface runoff, and groundwater. And however, the pit lake water is polluted, and the causes of pollution of the pit lake water are rainwater, which along with it brings the pollutants to the pit lake, the surface runoff, which also deposits the pollutants in the pit lake, and the groundwater leaching. Now, let us focus on some studies regarding the presence of contaminants and pollutants in the coal mine pit lakes of Raniganj. Here are some of the results of studies which have been done over 3 decades in the coal mine pit lakes of Raniganj. Now moving to the next slide. The aims and objective of this study is thus the phytoremediation of abundant coal mine pit lakes. After that, sustainable use of the pit lake water and biomass of phytoremediated macrophiles, which will eventually generate entrepreneurial possibilities and which will thus cause upliftment of the socio-economic status of tribal people. So now the question arises, what is phytoremediation? Phytoremediation is an amalgamation of 2 words, a Greek word phyto and a Latin word remedium, which means plant and restoring balance. Thus, the word phytoremediation can be defined as cleaning up of or purifying of land, air, or water full of hazardous contaminants by using plants and the associated microorganisms. Now let's focus on the strategies by which phytoremediation can be attempted on the coal mine pit lakes. There are usually 3 strategies, that is the constructed wetlands, the white type planting and harvesting, and the floating treatment wetland.
The constructed wetlands are are artificially constructed for the purpose of purifying the water. It is usually of two types: the free water surface flow and the subsurface flow. Uh, and to glance upon the first type, it comprises of exposed aquatic area covered with macrophytes, which are planted over thick substrate of soil. Water flows above the substrate, gets purified by plants, and flows out through outlet. And in the second type, that is the subsurface flow, the water is purified by the same process as has been used in the previous type, but the difference is this type of constructed wasteland is smaller in size and also uses microbial biofilm for purification, and is the most commonly used type of constructed wetland. As I have described, this is the diagram of the free water surface flow, where through the inlet the water is entered into the wasteland. It's get purified by with the plants and comes out through the outlet. And this is the next type, that is the subsurface flow. This is the mechanism of water purification. And now the next type, that is the wide macrophyle harvesting. In this time, in an already existing wetland, the wide type macrophytes or plants are used for the purpose of phytoremediation. But here, the needful purpose is the regular removal of the biomass of the aquatic plants for managing the pollutants present in the water body to be purified. In this, for removal of the biomass, generally two types of strategies are used. That is, the first is manual removal, to which, and the second type is installation of certain machineries on boats, and the boats are used to remove the biomasses. The next type is the wasteland, in which certain islands are created by using the buoyant materials like plastic or something, and in that frame, the media or substrate is provided for plantation of the macrophytes, and these buoyant islands are put on the wastelands. The roots, which are submerged in the water of the wetlands, ultimately do the purpose of phytoremediation, and thus the water gets purified. Now let us focus on some Please macrophytes. conclude, sir. और सर प्लीज कंक्लूड सर, प्लीज लास्ट कंक्लूड, आप लास्ट में आ जाएगी. Sorry, conclude sir, conclude. Already late sir. Okay. Now let us focus on some of the species which have been studied by various scientists. These are some of the lists of the plants which can be used for phytoremediation. And now let's focus on the next part of our study, that is the sustainable use of the phytoremediated pit lakes. The phytoremediated pit lakes and the water can be used for various purposes, like in the industry of bioethanol production, in the industry of irrigation, ecotourism, aquaponics, and aquaculture. Now let's focus on each aspect one by one. Like the bioethanol production, the biomass of the phytoremediated peats undergoes a pre-treatment to generate cellulose and hemicellulose, which are further hydrolyzed to produce fermentable sugars. Now these fermentable sugars undergoes fermentation and purification to generate bioethanol. However, the lignin is also produced along with cellulose and hemicellulose, which is removed out as it is of no use.
Now, regarding the bioethanol production, in various stages, the entrepreneurship can be generated, like in the biomass, which can provide as a raw material in the industry of bioethanol production. The next tactic can be setting up small scale plants for Okay, sir. bioethanol Okay, production. thank you, sir. Thank you, sir. Beautiful Or presentation. setting up of sorry. Okay, thank you, sir. Already late, sir. Sir, shall I Sir, present just it, a few sir? slides. And Next one, next serial number 7, Satya madam. Sir, Satya, Satya Shubha, sir. Satya yes. Shubha, sir. Only Yes, sir. 3 minutes, ma'am. Please short. Okay, sir. Sir, is my screen visible, sir? Yes, ma'am. Yes, Yes, sir. ma'am. Okay, sir. Very pleasant. Good afternoon, sir. I am Satya Shubha from RBS College of Arts and Science, Coimbatore, and Tamil Nadu, sir. My topic is nutritional status and effectiveness of online nutrition education interventions for adult, a systematic review. First, we will say about the introduction. Nutrition, it is one of the fundamental aspects of human well-being, crucial for maintaining health and supporting growth. When they have acquiring nutrient-rich foods and maintaining a balanced diet plays a vital role in this process. When they have globally, they have many major causes of death can be avoided by practicing a good nutrition, staying physically active, and embracing a wholesome way of life. So, obesity, one of the global health problem, it will be the 5th major cause of the mortality worldwide, and they have a lifestyle-related illnesses to the health problems. So, mainly they have to be included the cancer, diabetes, metabolic syndrome, and cardiovascular disorders. So, in this response, we have to be challenges. The nutrition education has emerged as a promising approach to improving the dietary habits and fostering the positive lifestyle changes. So, in this presentation, we have to search in a critical need for studying nutrition, particularly in the context of adult, to addresses the increasing health concern and related to obesity and non-communicable diseases. My objectives is to assess the nutritional status of adults and its association with disease risk, to then to identify the elements enhancing the efficacy of the online nutrition interventions. Then my need of the study is when the World Health Organization highlights obesity is one of the global health concern. Over 600 million people they have to be affected. So in which they have in 2016 they have 52% of the adults they have to be overweight and obese, and hypertension it is the one of the leading contributor of cardiovascular related death. So when they have around 1 million adults they have to be affected by hypertension. By 2025 hypertension it will be rise to 1.56 million cases. Then cardiovascular disease and diabetes are expected to double in India by 2020 and 2030 respectively. Then metabolic syndrome, it will be increases due to cardiovascular diseases, diabetes and stroke. So when they have a healthy diet, then physical activity and good nutrition are crucial for overall health. So for these reasons, we have well-designed health education awareness creation program on positive lifestyle changes would be promoted. Then come to the methodology. So when they have a methodology where they have a systematic review was conducted to assess the impact of nutritional status and intervention for following the PRISMA guidelines. So they have two independent invigilators. They have to be conducted the data extraction, exchange articles, and discuss the quality assessment. After the thorough discussions, final eligibility decisions were based on the quality. Initially, they had 60 articles were found from database like PubMed, Scopus, and they have a Science Data. Additional studies were scored for electronic searches and references. After two publications, they have 32 articles were evaluated, 17 were excluded criteria. Then among the remaining 15, they have 13 match and 2 they have a biased article. So finally, they have 11 articles they have to be evaluated. So this is the 11 articles. So when they have in the first one, they have a 146 subjects. They have a 15 to 16 years they have to be taken, in which they have to compare the rural and urban regions. So in this conclusion, they have a higher
they have in urban areas the BMI rate they have to be higher when they have in urban areas when compared to rural, and they have a dietary habits in which they have a rural they have to be poor, so they have a many chronic diseases they have to be occur in the rural regions. Then they have 100 adults they have to be 40 to 50 years they have to take care, in which they have to be compared the vegetarian and they have a non-vegetarian diet. So here they have to be concluded that non-vegetarian subjects they have to be overweight and mostly they have to be suffer to some sort of the illnesses. Then they have the third study they have a 150 adults age 18 to 15 years they have to be taken, in which they have to be compared the nutritional status of dietary intake of housed and homeless UK adults. So in this we have to be identified when they have a homeless adults they have to be overweight and obese, and mainly they have to be prone to number of the cardiovascular and diabetes diseases. Then fourth study they have a 3001 for 115 adults we have to be taken, in which they have to be the interrelationship of the adult diet, the nutritional status, physical activity they have to be assessed it, in which they have to be identified all the subjects they have to be a dietary intake was very poor, and they have most of the subjects they have to be overweight and they have a hypertension due to less physical activity. Then they have a age then next study they have 45 to 59 years, in which they have to be compared the traditional and they have a modern thing. So in which they have a traditional diet they have to be a lower metabolic syndrome they have to be occurred. Then next study we have to be analyzes the link between the diet and metabolic syndrome occurrence. So in which they have a subject they have to be a metabolic syndrome, they have to be a higher adiposity and they have a fat intake they have to be higher. Then the next study they have to be a high fiber diet, so in which they have to be when they have a intake of 25 gram per day of the fiber for women and 38 gram per day for they have to be taken. So in which they have a minimal weight and BMI and waist reduction they have to be occur. So the fiber they have to be helpful to reduce the weight. Then next study they have a intervention studies. They have a 4 intervention studies. In these 4 intervention studies they have to be when they have the before and they have after education the fruit and vegetable intake they have to be raised in, and they have more number of the people they have a physical activity they have to be increased after the education, and they have a more number they have to be a vegetarian diet they have to be taken, particularly when they have a low income group of people. After education we have to be the vegetable intake they have to be raised in, and they have some of the BMI they have to be after the education they have followed the diet in which they have a BMI they have to be reduced in. So according to the results and discussion, so when they have a finding highlights the effectiveness of assessing the nutritional status and online education leading to positive changes in habits, improved status and potential health benefits. So specific diets were linked to reduce the risk of metabolic syndrome and they have a cardiovascular disorders. So when they have an online intervention, it will be accessible, then cost effective, and they have a healthier lifestyle. So it will be the one of the emphasizing nutritional crucial role for the online platform. So nutrient rich choices and balanced diet they have to be prevent the many of the diseases. So according to the conclusion, the review highlights the importance of nutrition for health and disease prevention, particularly obesity. So when they have the online interaction, they have a positive and they have a dietary and they have a lifestyle changes, they have to be changed it. So the online based, it will be accessibility and they have a cost effectiveness and reduces the number of the illnesses. Mostly they have to have obesity, we have to be reduced. So in which they have obesity, we have to be prevent the some of the chronic diseases. Then my recommendations, so suggest future research areas such as exploring trialed online interventions for specific population, then discuss potential collaborations or strategies to enhance the effectiveness of online nutrition education. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Good presentation. Yes, sir. Thank you, sir. Next, Madhu Kumari, madam. Yes, sir. Serial Yes. number 104. जी यस सर, आवाज जा रही है मेरी? Yes, please, ma'am. मधु कुमारी, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, रांची यूनिवर्सिटी रांची। मेरा टॉपिक है असुर जनजाति के आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन। मैं आप लोगों के सामने आज अपना पेपर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी असुर जनजाति के बारे में। असुर जनजाति भारत की एक प्राचीन और आदिम जनजाति है जो मुख्यतः झारखंड, पश्चिम बंगाल में विद्यमान है। झारखंड में असुर जनजाति गुमला जिला में विद्यमान है।
मैंने फील्ड वर्क के द्वारा इनकी कुछ तस्वीरें इकट्ठी की है जो इस टॉपिक के लिए उचित है। असुर जनजाति की जो वास्तविक परिस्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी, ये है वो तस्वीरें। आवाज आ रही है सर? यस मैम, आवाज आ रही है आपकी? जी। मैं बताना चाहूंगी कि असुर जनजाति की जो आर्थिक स्थिति है इतनी बुरी है कि उनके पास रहने के लिए मकान, भोजन बनाने के लिए बर्तन और वस्त्रों की भी अभाव है। सरकार ने उनके लिए तो बहुत सारी योजनाएं बनाई है, लेकिन वो योजनाएं ग्रामीण स्तर पे उनके तक नहीं पहुंच पा रही है। इसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं एजुकेशन है। तो मेरे विचार से अगर उनके क्षेत्र में सबसे पहले एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए तो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। असुर जनजाति जो एक आदिम जनजाति वो बहुत ही भोली भाली है। उनके लिए जितनी भी योजनाएं चल रही है वो योजनाएं उन तक नहीं पहुंच पाने का मुख्य कारण शिक्षा है। और जब शिक्षा की कमी होती है तो योजनाएं उनके समझ से बाहर हो जाती हैं। और सरकार जो योजनाएं निकाली है कि असुर जनजाति अगर 10th तक भी पढ़ाई कर ले तो उनके लिए वो नौकरी का ऑफर देती है, लेकिन इसे जब हम फील्ड वर्क पे देखते हैं जाके बेसिक स्तर पे तो मुश्किल से 10% या 20% ही असुर जनजाति को जॉब नौकरियां मिल रही है। इसका मुख्य कारण क्या है, इस विषय में शोध करने की आवश्यकता है। और मैं बस इतना बताना चाहूंगी कि शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उन्हें किताबी ज्ञान दे। शिक्षा मतलब उनको हर स्तर से नॉलेज देना होगा, जागरूक बनाना होगा, ताकि वो अपने अधिकार के लिए खुद से लड़ सके और एक स्तर पे अपने आप को जागरूक बनाकर अपनी परिस्थिति को सुधार सके। धन्यवाद सर। पेपर बस इतना ही देना है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू, गुड प्रेजेंटेशन। डॉक्टर अरविंद प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर अरविंद प्रसाद सर, आप ज्वाइन हैं क्या? डॉक्टर गोपीराम शर्मा सर, तो डॉक्टर KR मथुरे सर, डॉक्टर अंजलि यार, तो वंदना उर्करे मैम, मुकुट लास्कार जी, आप ज्वाइन हैं क्या? राजेंद्र कुमार सोनवानी, डॉक्टर रवि कुमार आर, राजी ES, प्रोफेसर सपना डी गजबिये, डॉक्टर नितेश राज, डॉक्टर A राजशेखर सर, ओके, दिव्या मिश्रा, Yes, sir. Myself, Dr. Nitesh Raj. Good afternoon, sir. Hello, Divya Dr. Mishra. Yeah. okay, please wait Divya ma'am, please Okay, Dr. sir. Nitesh ji, yes Nitesh ji, please start. Right, sir. Right, sir. Right, sir. Just give me 1 minute. In fact, what? Chrome. PPT. Just a minute, I'm just sharing. Entire screen. Is this visible? No, sir. Okay.
Yes, sir. Yes. So it is. Yes, please continue. Right. This is my paper, in fact, that is Sustainable and Inclusive Strategy for Tribal Development in Jharkhand, addressing socio-economic aspects. And myself is Dr. Nitish Raj, and I'm the assistant professor in Department of Economics, Ranchi University, Ranchi. This is my paper, in fact, and I just want to give the congratulations to all the organizers, first of all the dignitaries and research scholars also. Just I want to start my paper, that is the Sustainable and Inclusive Strategy for Tribal Development in Jharkhand. Well, इसको मैं हिंदी में ही बताना चाहूँगा क्योंकि इससे ज़्यादा समझ में आएगा। इनफैक्ट एक्चुअली मैंने इस पेपर को जब मैंने सिलेक्ट किया तो उसमें मैंने ये देखने का प्रयास किया कि भाई ट्राइबल डेवलपमेंट हमारे झारखंड में क्यों नहीं हो पा रहा, या क्या कारण है जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इसमें। तो ये मैंने इंट्रोडक्शंस, जो मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी, रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च मेथोडोलॉजी, एवरीथिंग आई कवर्ड, सब कुछ मैंने कवर करके फिर रिजल्ट और डिस्कशंस में जो हम लोग आए उसी को फिर हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे वी हैव द टाइम रेस्टेंट ऑल्सो। एक मैथमेटिकल मॉडल एक्चुअली मैंने बनाया जो आप लोग को दिख भी रहा होगा। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो मैंने बनाया इसमें, और इसमें जो है मैंने वेटेज दिया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो कैसे जो है वो इंक्रीज कर सकता है, हमारा टोटल ट्राइबल के ग्रोथ रेट को इंक्रीज कर सकता है। उसके लिए मैंने बहुत से वेरिएबल्स लिए हैं आपको, जैसे ट्राइबल पॉपुलेशन है, नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, लिटरेसी रेट है, स्कूल एनरोलमेंट रेट है, हेल्थ इंडेक्स है, इनकम डिस्पैरिटी इंडेक्स है, एम्प्लॉयमेंट रेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स है और कल्चर हेरिटेज इंडेक्स है। इसके लिए अलग अलग मॉडल फिर मैंने बनाए हैं। पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस के लिए बनाया मैंने, डायनेमिक रिसोर्स एलोकेशन के लिए भी एक मैंने एजुकेशन बजट के रूप में बनाया है, और लाइवलीहुड और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए भी एक मॉडल मैंने बनाया है। मेरा एक्चुअली में जो जो मॉडल्स है वो हमारा बहुत सारे चीज़ों पे कवर करता है। जैसे एक मिनट में आता हूँ उसमें। हाँ, यस, एक्चुअली में मैंने इस मॉडल को बेस्ड किया आपको बिग पुश थियोरी, जो हमारी इकोनॉमिक्स में एक थियोरी आती है, बिग पुश थियोरी। उसमें रोस्टिन रोडान साहब ने 1943 में इस थियोरी को दिया था। उनका फंडामेंटल ये था कि हम लोग एक सर्टेन मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे तो किसी भी इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी जो है बहुत अच्छे से सस्टेनेबल तरीके से वो डेवलप करेगा। तो उसमें ज़रूरी है कि सर्टेन मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो किया जाए, और ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप ढंग से करते हैं उस चीज़ को। जैसे कि एग्जांपल है आपको एलन यंग ने दिया था, हु फेमसली यूज्ड द एग्जांपल ऑफ शू फैक्ट्री टू इलस्ट्रेट दैट फोकसिंग solely on producing a single product like shoe, मतलब हम शू पे केवल अगर निर्धारित इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा, केवल शू का ही डेवलपमेंट होगा, और उसके जो कर्मचारी जो उसमें काम कर रहे हैं वो केवल शू में ही, शू फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं उनका वही कंज्यूमर भी रहेंगे, तो केवल शू ही खरीद पाएंगे। दूसरे सेक्टर में उनका कोई योगदान नहीं हो पाएगा, दूसरे सेक्टर के लिए वो क्लाइंट नहीं बन पाएंगे। दैट इज द मेन इशू हियर। अब अगर हम लोग इसमें क्या करेंगे कि मल्टीपल फेरियस, मतलब अगर वो शू फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं वो लोग दूसरे जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो नेचुरली सारे चीज़ों का इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ आता है? प्रॉब्लम्स आता है कि हमारा जो रूरल इकोनॉमी ऑफ झारखंड है वो हमारा मतलब क्यों ये नहीं इकोनॉमिक ग्रोथ रेट उसमें तेज है। उसमें मेन कारण जो हम समझते हैं उसके अनुसार है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। हमारे पास प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स के लिए जो हमारे पास कैपिटल होना चाहिए वो नहीं है। जो स्कार्सिटी है वो हमारा क्यों है? क्योंकि हमारा जो ट्राइबल रीजन्स है, हम मेनली ट्राइबल रीजन्स को फोकस किए हैं, उसमें क्या हो रहा है कि सेविंग रेट काफ़ी कम है यहाँ पर ट्राइबल रीजन्स का। सेविंग रेट कम होने के कारण क्या हुआ कि आप लोग जानते हैं अच्छे से कि हायर सेविंग या हायर इन्वेस्टमेंट लेकर के आता है। मेनली चूँकि वो सस्टांस लेवल पे जिंदगी जी रहे हैं, इस कारण उनके पास में सेविंग रेट कम है। हम लोगों को उनका इनकम को इंक्रीज करना चाहिए। रोस्टान साहब भी जो है वो बोलते हैं कि अभी किसी भी इकोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए जरूरी है वहाँ की कैपिटल अपलिफ्टमेंट कराया जाए, कैपिटल एक्यूमुलेशन कराया जाए, गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल को इंक्रीज किया जाए। इससे क्या होगा कि हमारा इनकम लेवल बढ़ेगा। उससे क्या होगा कि आपको इनोवेटिव आइडिया आ जाएगा। इनोवेटिव आइडिया आ जाएगा मतलब कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा तो इकोनॉमी ग्रो करेगी ऑटोमेटिकली। तो झारखंड के ट्राइबल इकोनॉमी में भी जो फोकस हमारा होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि हम लोगों की इनकम को इंक्रीज करना चाहिए। अब एक मेन समस्या हमारे पास में आके सामने आ रही है, क्या इनकम को कैसे इंक्रीज करेंगे। इनकम को इंक्रीज करने के लिए जैसे हमारे 3 साहब जो है इकोनॉमिस्ट, फेमस इकोनॉमिस्ट,
उन्होंने कहा था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो वो जो पॉलिसी थी वो 1970s 80s तक बहुत ज़्यादा काम भी किया था। बाद में जाकर के हम लोग देखते हैं 2008 में भी फेडरल रिजर्व जो अमेरिका का रिजर्व बैंक है उसने भी इस पॉलिसी को अपनाई। हम लोग देखते हैं कि झारखंड की इकोनॉमी में क्या हम लोग इसको अडॉप्ट कर सकते हैं? बिल्कुल किया जा सकता है। हम लोग को पब्लिक एक्सपेंडिचर की झारखंड की जो सरकार है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर रूरल इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा आपको इनफ्लो करे मनी का, यानी कि सड़कें बनवाएं, पुले बनवाएं, आपको वहाँ पर प्लांटेशन करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार में इन्वॉल्व करें, उन लोगों को ट्रांसफर पेमेंट के रूप में पैसे दें उनके हाथ में, ऑटोमेटिकली उनका इनकम इंक्रीमेंट होगा। इनकम इंक्रीमेंट होगा तो सस्टेंट लेवल से वो ऊपर उठेंगे, मतलब खाने पीने की चीज़ों के अलावा वो सोचने लगेंगे मकान कैसे बनाएं, आपको और अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट्स कैसे लाएं, खेती के लिए हम लोग बीज कहाँ से खरीदें, हम लोगों को और हल बैल की जगह हम ट्रैक्टर कैसे खरीदें। मतलब वो धीरे धीरे करके क्या होगा कि उनका जीवन स्तर में भी सुधार होगा इन सारी चीज़ों से। तो दिस इज द ये मेरा जो पूरा थियरी है इसका आउटकम भी हमने फिर बताया है कि कैसे वो इंक्रीज करेगा तो उसका लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन होगा, क्वालिटी एजुकेशन उसमें आएगा, कम्युनिटी एम्पावरमेंट आएगा, पार्टिसिपेशन होगा, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट होगा, कल्चरल प्रिजर्वेशन और आइडेंटिटी खुद ब खुद डेवलप करेगी। अगर आपके पास पैसे होते हैं ना हाथ में तो नेचुरली आप अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं अच्छे से और उसको उसकी एक आइडेंटिटी बना सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी बढ़ेगी आपके पास में, तो और एक पॉवर्टी जो लेवल है उस पर बहुत ज़्यादा अटैक किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें दी हैं। लास्ट में मैंने सजेशंस और फिर लास्ट में कंक्लूजन भी दिया है। सजेशंस भी मेरा वही है कि आपको एक स्किल एनहेंसमेंट के कोर्सेज किए सकते हैं, इसके लिए लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, लैंड एंड रिसोर्स राइट है, हेल्थ केयर न्यूट्रिशन है, सारी चीज़ें आ जाएंगी अगर आपके पास में एक वेल ऑर्गेनाइज मार्केट हो, एक वेल ऑर्गेनाइज पब्लिक एक्सपेंडिचर हो और वो पता होना चाहिए उसको। जैसे बिग पुश थियरी मैंने कहा एक ही सेक्टर में नहीं बल्कि सभी सेक्टर्स में हम लोगों को झारखंड की इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो दिस इज माय पेपर और इसमें मैंने फिर अपना रेफरेंसेज वगैरह भी जो है वो निकाल करके दिया है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू ऑल। Thank you, sir. Thank you. Beautiful presentation. Okay, next, Divya, madam. कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं प्लीज। Okay, next, Divya मिश्रा प्रेजेंट करेंगे क्या? Okay, next, प्रशांति DJ. सर दिव्या मिश्रा, हेलो सर दिव्या मिश्रा, गुड आफ्टरनून सर। Okay, Divya ma'am, please. Only 3 सर minutes. मेरा पेपर, ओके सर, मेरा पेपर है छोटा नागपुर के संदर्भ में उरांव युवक का अध्ययन। झारखंड की उरांव जनजाति, झारखंड की उरांव जनजाति दूसरी बड़ी संख्या उरांव की है झारखंड में। यह भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। यह पूरे भारत के विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं, जिनमें से अधिकांश झारखंड के छोटा नागपुर पठार पर केंद्रित है। ये झारखंड के बाहर असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। दूसरा है उरांव जनजाति की अर्थव्यवस्था। उरांव जनजाति अस्थायी कृषक है। ये मोटे चावल, बाजरा, दलहन, तिलहन आदि का खेती करते हैं। यह बत्तख, मुर्गा, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस आदि को पालते हैं। भूमिहीन उरांव खानों एवं चाय बागानों में मजदूरी का काम करते हैं। यह चावल से बने वाली शराब को हड़िया कहते हैं और यह उसका सेवन करते हैं। उरांव जनजाति की सामाजिक व्यवस्था। उरांव जनजाति के प्रमुख 14 गोत्र हैं। लकड़ा, रुंडा, गारी, तिरकी, कुस्कोटा, टोप्पो, एक्का, लिंडा, मेंच, कुजुर, बाड़ी, बैंग, खलखो एवं केरकेट्टा। उरांव जनजाति का युवा गृह धूमकुरिया कहलाता है। उरांव जनजाति समगोत्री विवाह को मानते हैं। इसमें विवाह मुख्यतः बही गोत्र के आधार पर होता है। उरांव गांव का मुख्य महत्व कहलाता है। उरांव जनजाति के पंचायत पंचोरा कहा जाता है। गोदना की प्रथा प्रचलित है। गोदना को उरांव बहुत महत्व देते हैं। उरांव जनजाति में आमतौर पर एक विवाह की प्रथा है, किंतु विशेष परिस्थिति में पति का दूसरा विवाह करने की छूट है। उरांव समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है। उरांव में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह है। उरांव में सेवा विवाह की परंपरा प्रचलित थी, जिसमें भावी वर कुछ समय तक भावी वधु के परिवार की सेवा करते थे। दूसरा है उरांव जनजाति का धर्म। उरांव का सर्वप्रथम देवता धर्मेश है, जिन्हें जीवन तथा प्रकाश देने में सूर्य के एक समक्ष माना जाता है। उरांव तांत्रिक एवं जादू विद्या
में विश्वास करते हैं। उरांव के अन्य प्रमुख देवी देवता हैं पहाड़ी देवता, ठाकुर देवता, दिहवार और पूर्व जामता कुल देवता आदि। पहन उरांव गांव का धार्मिक प्रधान होता है। पुजारिया पहन का सहयोगी होता है। सरना उरांव का मुख्य पूजा स्थल है। शासन यह उरांव के पूर्वजों की आत्मा का निवास स्थान होता है। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सर। प्रशांति पीके। Yes, sir. ओके प्लीज मैम। Okay, sir. Hello, I would like to present the paper, sir, if possible. Please wait, sir. Okay. Okay, next, Angelita John. Angelita John. Yes, sir. Yes, sir. I am present, sir. Yes, please. Yes, sir. Angelita John from. Yes, sir. Can you see my Yes. page, sir? Is my tab visible to you? Yes, madam. Yes, sir. I will present my paper. My paper is a literary interpretation of a Bible. First, the Bible is a primarily a literary work which is essential for Bible scholars and educators to understand and appreciate. The literary approach to the Bible helps to avoid oversimplification and values all aspects used to biblical authors. It is essential to understand and analyze narratives and visionary writings to deepen comprehension. The Bible genres help us to understand its vast content and prevent oversimplifying it as a single genre. By understanding the Bible's literary style, we can interpret and study any section without leaving a biblical text, contextual framework, or entering its theological sphere. Actually, the main theme I have taken about Bible is we can interpret Bible as a literary work. Even when we take any chapters from Bible, it can be interpreted in literary works. There are 4 common misunderstandings about Bible's literary approach. First, the idea of the Bible as the literary appears liberal and unbelief-driven. The Bible is considered literary because it is ancient, written in masters of literary skills. The Bible's people and events are not fabricated like those in fiction or fantasy. As the traits that define a literary work remain the same regardless of whether the text is based on fact or fiction. And the Bible is not a book that can be read as a separate entity, but rather a collection of literary, historical, and religious elements. Its essence is not to be studied in isolation, as it combines elements in these genres. The Bible's unique qualities, such as its spiritual essence and influence, are showcased through its literary form, and Bible encompasses a diverse range of literary genres, with 80% being presented in narrative, poetry, and vision and epistle. In conclusion, the Bible is a work of literature that requires a literary approach to understanding and its genres such as narrative, poetry, and visionary writings, which helps to
create a vast content of the Bible and its various interpretation and applicability. The aesthetic appeal of this literary structure within the Bible is easily appreciated and held in high regard. By familiarizing ourselves with the various genres found in the Bible, we can immerse ourselves in the vivid portrayal of universal human experience and applicable and appreciate its unique qualities. Sir, that's all, sir. Sir? Thank you, ma'am. Thank you. मौसमी मुखर्जी, नेक्स्ट मौसमी मुखर्जी, आप ज्वाइन हैं क्या? ओके, नेक्स्ट रीबा वानी तिरके। ओके, नेक्स्ट अलबीना। यस सर, मैं प्रेजेंट हूँ। ओके, प्लीज मैम। आप सबों को जोहार। मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी। मेरा नाम अलबीना कच्छप, शोधार्थी विनोद बिहारी महतो, कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद। और आज के मेरे पेपर का विषय है विकास की ओर बढ़ते कदम, झारखंड के बिरहोर जनजाति के संदर्भ में। आदिम जनजाति बिरहोर, जो कि झारखंड राज्य के कई जिलों में जैसे रांची, दुमका, लोहरदगा, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह, यहाँ पे निवास करते हैं। और ये बहुत ही पिछड़े जनजाति हैं और ये लोग जंगली हैं, लेकिन बहुत ही सीधे साधे हैं। पहाड़ों और जंगलों में ये निवास करते हैं और बिना कुछ उपजाए पूरी तरह से ये जंगली कंदमूल, फल, बंदर, तीतर, बटेर, जड़ी बूटियों पर निर्भर हैं। और इनमें एक खास शक्ति है, ये बंदरों को बहुत जल्दी सम्मोहित कर लेते हैं, जिस वजह से बंदर जिस पेड़ में रहते हैं वो भाग नहीं पाते हैं और ये उनको पकड़ लेते हैं और फिर उनको नाचना सिखाते हैं और फिर उनका नाच दिखाकर ये अपनी जीविकोपार्जन करते हैं और गुजर बसर करते हैं। और ये बहुत ही संकोची स्वभाव के होते हैं। किन्हीं को भी ये अगर देख लेते हैं अपनी ओर आते तो बहुत तेजी से दौड़कर ये जंगलों और पहाड़ों में चले जाते हैं। इनका रंग रूप बहुत अच्छा नहीं है, बहुत गंदा है। और ये जिस पर्वत श्रेणी या जंगल में रहते हैं वहां तब तक रहते हैं जब तक कि इनके इस्तेमाल में की जाने वाली जो सामान है, कंदमूल है, फल है, जड़ी बूटियां हैं, वो खत्म ना हो जाए। उसके बाद ये अब दूसरी जगह चले जाते हैं। इनके निवास स्थान को टंडा कहा जाता है और ये टंडा में एक झोपड़ी नुमा घर होता है जिनको कुंभा कहा जाता है, जिनमें ये लोग रहते हैं। और ये जंगल की एक प्रकार की लता लेकर आते हैं जंगल से और उनसे बहुत अच्छा रस्सी बनाते हैं। ये चटाई भी बनाते हैं, सूप बनाते हैं, जाल बनाते हैं, टोकरी बनाते हैं और उन सभी को अपने निकट बाजारों में जाते हैं और बेचते हैं और फिर अपने घर में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों को लाते हैं। वर्तमान समय में झारखंड सरकार के द्वारा इनके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है और इनको स्थायी जीवन के लिए प्रयासरत हैं और इनको मकान दिया गया है जिसमें ये निवास करते हैं। मैं जब इनका सर्वे की थी और इनसे जब बात की थी हजारीबाग में, तो मैं बोली थी कि आप जंगल में घूमते हो, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, अब हम लोग स्थायी हो गए हैं और यहाँ के ये लोग अब बहुत सारे काम को कर रहे हैं, जैसे बढ़ई, राजमिस्त्री, ड्राइवर, खलासी, मजदूर, इन सब कामों को ये कर रहे हैं। और इनकी बस्तियों में मिशनरीज ने काम किया है और इनको पढ़ाई के लिए प्रेरित किया है, जिससे ये पढ़ाई के लिए भी आगे आ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और इनमें से मैंने कुछ लोगों से मिली थी, कुछ बच्चों से मिली थी जो इंटरमीडिएट फर्स्ट डिवीजन में पास किए हैं 2022 में। और इनकी बस्तियों में, इनके टंडा में आंगनवाड़ी केंद्र चलाया जाता है जिला समाज कल्याण विभाग के द्वारा, जहां इनके छोटे छोटे बच्चे
पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और इन्हें मेडिकल की सुविधा भी दी जा रही है, जिससे गर्भवती स्त्रियों को उचित सुविधा दिया जाए, चिकित्सक के सुविधा दिया जाए और इन्हें सरकार के द्वारा 35 kg चावल दिया जाता है और हर परिवार को 1000 रुपीज दिया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि ये इनके बारे में ये भी कहा जाता था किसी जमाने में कि मैंने डाल्टन की टिप्पणी में पढ़ा था कि कुछ लोगों ने इन्हें पकड़ के लाया और बताया कि ये नरभक्षी हैं। ये अपने मृत प्राय संबंधियों को और जो लोग भी हैं इनके जान पहचान के, उनको जब वो मरने वाले होते हैं तो उनको मार कर उनके मांस को खा जाते हैं। जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा हम लोग ये काम नहीं करते हैं, हमारे पूर्वज ये काम करते हैं। लेकिन आज जब इनकी स्थिति देखी जा रही है तो ये विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इनके घरों को ये बहुत अच्छे से रख रहे हैं और इनके घरों में ऐसा नहीं है कि ये अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। ये जंगलों में जाते हैं, इनके पास जंगल जानवर पकड़ने के लिए जाल भी है, इनके चूल्हे मिट्टी के चूल्हे हैं, लेकिन आगे भी बढ़ रहे हैं, विकास हो रहा है इनका। बहुत ज्यादा विकास तो नहीं हुआ है इनका, लेकिन आगे और भी विकास की जरूरत है इन्हें। धन्यवाद। सर धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू, ब्यूटीफुल। अलबीना मैम, डॉक्टर तिमन्ना। अलबीना मैडम, इनका रंग रूप कैसा है, आपने क्या बताया था? अलमीना मैम, एक हेलो। मिनट। उनके रंग रूप में कहा गया कि वो बहुत गंदा तरीके से रहते हैं, गंदे रहते हैं, मैले कुचले रहते हैं, उनका बाल बिखरा हुआ रहता है। अपने अध्ययन तो बहुत अभी तो बहुत हद तक उनमें सुधार आया है। जो शब्द आप यूज कर रहे हैं वो उचित है क्या? मैं समझी नहीं सर। जो शब्द आप यूज कर रहे हैं रंग रूप गंदा है, तो ये तो रंग रूप सॉरी सर, मैं गंदा बोली, मैं माफी चाहती हूँ। वो बहुत गंदे तरीके से रहते हैं, मैले कुचले रहते हैं। तो रंग रूप में गंदे कुचेले कैसे हो जाएगा मैडम? रंग रूप कैसा है? नहीं मतलब उनका पहनावा, उनका मतलब उनको पानी की सुविधा दी गई है, फिर भी वो अच्छी तरह से साफ सुथरा नहीं रहते हैं। चलिए मेरा उनके सुझाव हर घर में जब भी हम नल लगे हुए। सार्वजनिक हाँ एक मिनट सर। शब्दों का हाँ फिर से करें हाँ तो शब्दों का इस्तेमाल बड़े सोच समझ के करना चाहिए। हाँ हाँ सॉरी सर। दूसरा चीज, इनकी आजीविका का मुख्य साधन क्या है? हाँ अभी अभी ये लोग बहुत सारे कामों को कर रहे हैं। ड्राइवर हैं, ये राजमिस्त्री हैं और ट्रैक्टर चलाते हैं, मजदूर का काम करते हैं ये लोग। ओके। जब इनसे मैं मिली थी हजारीबाग के कटकम सांडी में, तो इन्होंने बताया कि हम लोग काम कर रहे हैं। और खेती बाड़ी के बारे में भी जब मैं पूछी थी इनसे तो इन्होंने कहा हम लोग नहीं करते हैं, खेती बाड़ी नहीं करते हैं। खेती बाड़ी नहीं है और अब हम लोग नहीं है सर, नहीं करते। कुछ थोड़ा बहुत वो साग सब्जी लगाते हैं और जंगल में ये लोग जाते हैं, लेकिन अब उतना वो लोग जानवरों को नहीं पकड़ते हैं। ओके। दूसरा, फिर आपने एक और शब्द का इस्तेमाल किया था, जंगली। हाँ। उससे अपन को सोचना चाहिए, जंगल में निवास करना और जंगली होने में बहुत अंतर होता है। हाँ जी, चलिए। तो जंगल में धन्यवाद निवास सर। की आजीविका जंगल पे भी निर्भर है, ऐसा हाँ हाँ। ओके, चलिए ठीक, गुड। आप अगली बार से ध्यान रखें, थोड़ा शब्दों का हाँ ठीक है सर। को बड़े सोच समझ के करना है। थैंक यू। धन्यवाद सर। कंटिन्यू प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सर। डॉक्टर तिमन्ना सर फ्रॉम कर्नाटका।
Okay, next, Tikeshwar Kumar Verma from Chhattisgarh. Okay, next, Dr. Rupa. Dr. Rupa, madam. ओके, आज हमारा सेशन यही एंड करेंगे क्योंकि आज हमने 2 दिन का सेशन है, तो कुछ लोग कल प्रेजेंट करना चाहते हैं, है ना? तो डॉक्टर प्रोफेसर शमी विक्टर सर, प्लीज conclude today's session. Yes, sir. So thank you all the delegates, dignitaries and guests who have सर आज मेरा करा लेते सर, कल वर्किंग डे है, चले जाते। ओके सर, ओके समी यस सर, सर, प्लीज रिजवान कह रहे हैं सर आज करा लेते, मेरा कल वर्किंग डे है, क्लास में रहेंगे कल। ओके, प्लीज स्टार्ट सर, रिजवान सर, प्लीज स्टार्ट। Okay, thank you sir, thank you. Thanks to one and everyone. Good morning and good evening to everybody. So today I have got the opportunity through this international conference to speak about the reflections of Munda rebellion and the magnitude of tribal regeneration in Jharkhand especially. So before talking about the tribals, I would like to quote the very first stanza of Kali Mati by Amjad Ali, in which he has given the he has given or highlighted the cultural positions of the tribes, and he has written in that, it is written in Urdu, but he has given a very good glimpse that they are very unanimous in worshipping a Singh Bonga, the godfather. One thing more, he has talked about that they have developed a very good quality of cultural compositions in their life, like they are depending on the forestry foods. They are stepping up their legs on a common platform and a common dance tune that are naturally they are very sound, and all those things that reflect that these tribes, they are very soft in nature and behavior. Now, while we are talking about the Munda tribe, we are bound to say that the struggle for the rebellions that was launched by these Adivasis was actually to safeguard their traditionally held communitarian properties of Jal, Jungle and Zameen that we have talked about a lot. Moreover, going ahead, we have come across that the tribes, while defining, are the isolated communities of primitive food gatherers living in hume cultivation as agriculture laborers and subsisting and police recruited to work for distant plantation, mines and factories. The British colonial laws made from the 1860s onward were onslaught against the ancestral collective property of the tribes on land called Khunkatti. Moneylenders, traders, land grabbers, contractors, the Dikus were deeply hated by these tribes, this tribal society. The laws of the reserve forest began to displace the tribes and making them lose the timber and grazing facilities as the Dikus monopolized this. These are the statements made by the Sumit Sarkar while he traces the problems related to the uprisings of the tribals. But while we talk of these resistances in India, we come across the Birsa Munda Ulgulan, the great tumult of 1899 to 1900, which was very ferocious. And that was actually a counter-revolution against the Jagirdars and Thikedars, as well as the merchants and moneylenders coming from the northern plains, who were eroding their Khunkatti land system. Khunkatti was actually the Jain holding, whereas Khunts means the tribal lineage. Words and all, when we come across this again, Birsa
the people of the common tribes at that time, they were thinking Birsa Munda as the Dharti Aba, the Masiha, with a divine power. Therefore, they all gathered on his call, and as you know, that we all come across the history, that they declared Dikus as enemies, colonial administrators, Christian missionaries, landlords, moneylenders, traders, ठेकेदार्स, etc. They all thought that these are the roots of their problems. Moreover, when we go to the when we come across the writings of Ramchandra Guha in his latest essay about the Adivasi Naxalites and Indian democracy, we can say that, and he writes that Adivasi as a whole have gained least and lost most from 6 decades of democracy and development in India. They are even more deprived than the Dalits. However, unlike the Dalits, they have been unable to effectively articulate their grievances through the democratic and electoral process. The failure of the state and of the former political system had provided a space for Maoist revolution to move into. There is a double tragedy at work in tribal India. The first tragedy is that the state has treated its Adivasi citizens with the contempt and condemnations. The second tragedy is that their presumed protectors, the Naxalites, offer no long-term solution either. Thus, while celebrating the World Tribal Day for the tribal pride as a community of knowledge producers and disseminators, we need to learn from the work towards pluralizing and strengthening the democracy. This can be done by making all segments of our population as participative partners rather than by oppressing and marginalizing them. The citizens need to be vigilant about the state becoming violent towards the weaker section, or else the rituals of observing these World Tribal Day just for cosmetic purposes won't serve any purpose. Thank you, sir. Okay, thank you, sir. Thank you, everyone, sir. Sir, I want to present my paper, please. Let me give opportunity. मैडम कल रहेगा प्रेजेंटेशन में, आज ऑलरेडी लेट हो गए हैं। कल भी हमारे 2 सत्र चलेगा, उसमें आप प्रेजेंट कर सकते हैं। एक्चुअली सर कल कॉलेज है और कल क्लासेस है, अगर आज मौका जी सर एकदम शॉर्ट है मेरा। ओके थैंक यू सो मच सर। Good afternoon, dignitaries and all participants from various places who are present in this seminar. I, Archana Kumari Singh, research scholar and assistant professor, Bokaro Steel City College, Binod Bihari Mehto, Koilanchal University, Dhanbad. The title of my paper is Socio-Economic Influence on Making and Uprising of Jharkhand. First of all, I am grateful to organizers who provided me opportunity to share my views on today's topic. In my paper, I have tried to highlight the major socio-economic factors which were responsible for making of Jharkhand. We know that the creation of Jharkhand as a separate state in India was influenced by socio-economic factors such as tribal identity, land rights, regional disparities, demands for local governance, and economic differences. The outcomes have included increased focus on tribal welfare, resource development, and efforts to address socio-economic imbalances. The state formation aimed to address these concerns and bring development to the region. Some effects of this decision have included increased focus on tribal welfare, greater control over natural resources, and efforts towards economic growth through industrialization and infrastructural development. However, challenges like displacement due to industrial projects and managing ethnic diversity have also emerged. The state's formation aimed to address these concerns and bring development to the region. Some outcomes of this decision have included increased focus on tribal welfare, greater control over natural resources, and efforts towards economic growth through industrialization and infrastructural development. The formation of Jharkhand as a separate state in India was largely influenced by socio-economic factors. I have tried to jot it down some of the key points. The first one is tribal identity and autonomy. The region of Jharkhand has a significant tribal population with distinct cultural and social identities. The demand for a separate state was driven by the desire for greater autonomy and self-governance to protect and promote these tribal identities. The second factor is economic disparities. The rich was rich
The area was rich in mineral resources like coal, iron ore, and mica, but many local communities did not directly benefit from the economic activities surrounding these resources. The demand for a separate state was seen as a way to ensure more equitable distribution of wealth and resources. The next point is land rights and resources. The tribal communities in the region had concerns about land alienation and loss of control over their traditional resources due to industrialization and urbanization. The creation of separate state was expected to provide a platform for addressing these concerns and safeguarding land and resource rights. The next is regional imbalance. The region of Jharkhand was perceived to be economically and socially neglected in comparison to other parts of the state it was previously as a part of Bihar. The demand for a separate state was rooted in the aspiration to address these regional imbalance and promote overall development. The second last point that I have taken is local governance. The creation of separate state was seen an opportunity to establish more responsive and accountable local governance structures that could cater to the specific needs and aspirations of the people in the region. The last point is political mobilization. Various socio-political movements, including those led by tribal leaders and activists, played a significant role in raising awareness about the socio-economic issues faced by the region and mobilizing support for a separate state. That's it. Thank you so much, sir, for giving me opportunity to just share my views. Okay, thank you, ma'am. Thank you, sir. Sir, can I please submit the paper? Hello. Sir, I'm Prashant. Can I submit the paper, please? Okay, ma'am. Only 2 minutes, ma'am. Please, sir. Yes, sir. Hello, sir. Sir, is it visible? Yes, ma'am. Please continue. Yes, sir. Okay, sir. Sir, I'm Prashanti PK, research scholar ISC research from Kerala. My topic is a study on pro-environmental behavior among secondary school students. What is pro-environmental behavior? Pro-environmental behavior, also known as green, sustainable, or eco-friendly behavior, is defined as behaviors in which individuals take protective actions towards the environment. For example, recycling, using public transport, and energy conservation at home. Many of the environment-related problems are rooted in human behavior and can thus be managed by changing the relevant attitude to reduce its environmental impacts, and it also leads to attain environmental sustainability. Objectives: to find out the pro-environmental behavior among secondary students for the total sample, to compare the PEB of the following subsample based on gender, to compare the PEB of the following subsample based on locale, and to compare the PEB of the following subsample based on type of management. Then hypothesis: there is no significant difference in the pro-environmental behavior of secondary school students. There is no significant difference in the PEB of secondary school students based on gender. There is no significant difference in the PEB of secondary school students based on locale. There exists a significant difference in the PEB of secondary school students based on the type of management. Then methodology. Method: normative survey method is used. Then samples: stratified random sampling technique. I collected 300 secondary school students of Thrissur and Palakkad, district, Kerala. Subsample: gender boys 163, girls 137, urban 152, tribal 148, government 163, and aided 137. The tools and techniques chose: use the pro-environmental behavior scale,
Then preliminary analysis and test of significant difference between means. Then results. Classification of total sample height, average and log for PEB group. Major findings. The table shows that only 80% of the secondary schools possess high PEB. Majority of the students fall in the average group. The total number of students in the average and low groups come about 82%. This shows that the secondary school students of Thrissur and Palakkad district, with the exception of a few, do not have high PEB. Then comparison of PEB based on gender. This data presented in the table shows that the obtained T-value is 0.69. It is not significant. This showing that PEB of boys and girls are in the same manner. A close observation of the mean score shows that girls possess better PEB compared to boys. Then comparison of PEB of the sample based on locale. The data presented in the table shows that the obtained T-value is 3.50 is significant. This showing that students from tribal and urban areas are significantly different in their PEB. It shows that tribal students have better PEB than the urban students. Then comparison of PEB of the subsample type of management. The obtained T-value is 1.94. It is not significant. It is showing that PEB of government and aided schools are in the same manner. A close observation of the mean score shows that students of government schools possess better PEB compared to students of aided. Then tenability hypothesis. The first hypothesis states there is no significant difference in the PEB of secondary school students. Findings of the study reveals that there is significant difference between the high, average, and low PEB group. Hence, hypothesis 1 is rejected. The second hypothesis states that there is no significant difference in the PEB of secondary school students based on gender. Findings of the study reveals that there is no significant difference in the PEB of secondary school students based on the gender. Hence, hypothesis is accepted. The third hypothesis states that there is no significant difference in the PEB of secondary school students based on locale. Findings of the study reveals that there exists a significant difference in PEB of secondary school students based on locale. Hence, hypothesis 3 is rejected. The fourth hypothesis states that there exists a significant difference in the PEB of secondary school students based on the type of management. Findings of the study reveals that there is no significant difference in the PEB of secondary school students based on locale. Hence, hypothesis 4 is rejected. In conclusion, I hope findings of the study helps to identify the scientific spirit and connect with the nature by going outside the classroom and being with the environment. That makes children aware and active about their ecological footprint on land, water, energy, etc., starting from the school. As a result, it can be understood that there is a vast scope for providing orientation and training programs to secondary students for the development of PEB to greater extent. It would be very effective to achieve sustainable development goals. Thank you, sir. Okay, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. ओके थैंक यू शैमी सर आप ज्वाइन है क्या ओके यस यस सो आज जिसने पेपर प्रेजेंट किया है वो अपना पीपीटी हमें मेल शेयर कर देंगे है ना आज भी हमारे 2 बेस्ट पेपर रहेंगे उसको हम कल बताएंगे जो रहेंगे कल भी हम 2 लोगों को बेस्ट प्रेजेंटेशन करेंगे जो कल का प्रेजेंटेशन रहेगा तो सीरियल नंबर 131 टू प्लीज रेडी टुमारो है ना प्लीज सेंड योर पेपर फुल पेपर है ना उसमें हम 2 लोगों को बेस्ट पेपर्स का अवार्ड भी देंगे जो अच्छा पेपर्स हमारे पास भेजेगा उसको हम एक इंटरनेशनल जर्नल में भी पब्लिश करेंगे अगर किसी ने फुल पेपर नहीं भेजा है तो वो हमें 20 तारीख के पहले भेज सकता है उसको हम एक इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश करेंगे है ना और आप आज अभी हमें 8 बजे तक अपना टाइटल और पेपर भेज दीजिए तो आप कल प्रेजेंट कर सकते हैं है ना तो कल भी हमारे 2 सत्र होने वाले हैं जिसमें फर्स्ट हमारे स्पीकर्स रहेंगे और सेकंड सत्र 1 बजे से रहेगा पेपर प्रेजेंटेशन तो भी हम करेंगे ओके प्लीज मोबाइल नंबर बता रहा हूं ओके प्लीज प्रोफेसर समी सर प्लीज वोट ऑफ थैंक्स टुडे सेशन एंड Yes, sir. Thank you. So I'd like to extend my warm wishes and thanks to all the chief guests, dignitaries, and delegates who are here, and all the paper presenters who had well-researched and very informative papers during the session. So a big thanks to all of them. और वोट ऑफ थैंक्स के लिए हम बुलाना चाहेंगे हमारे कॉलेज के साइकोलॉजी के जो टीचर है प्रोफेसर है
Dr. Sidam Singh Munda for the vote of thanks. हाँ, सभी को जोहार। जोहार सर। विश्व आदिवासी दिवस की सबको शुभकामनाएं, बधाई। आज के इस 2 days इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च इन ट्राइबल डेवलपमेंट विषय पर एकत्रित हुए सभी लोगों को, और इसमें जो हमारे चीफ गेस्ट, हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर विमल प्रसाद सिंह, और इस यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस चांसलर हमारे डॉक्टर सोना झारिया मींज मैडम, जो आज चीफ स्पीकर के रूप में उपस्थित हुई थी। मैं उन दोनों के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपना समय निकालकर इस कार्यक्रम में आके मार्गदर्शन किए। साथ ही इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए साहिबगंज कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राहुल कुमार संतोष जी, साथ में सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट वेलफेयर एसोसिएशन और यूथ इकोनॉमिक एसोसिएशन के जो मेंबर हैं, उनको भी हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। साथ में हमारे इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जो सेमी विक्टर मरांडी जी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस कार्यक्रम को इतने अच्छे से आपने करवाए। इस कार्यक्रम के कन्वेनर हेरिल इरहम मुजुकी जी, और इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए तमाम विद्वान जो अपना अपना पेपर प्रेजेंट किए, और जिनका कल पेपर प्रेजेंट होगा, आप सबों ने इस विषय पर जो अपना अपना अनुभव साझा किया, उन सबों को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और जोहार करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपना आपको दिल से धन्यवाद सर। जोहार सर। जोहार। थैंक यू सर। प्रणाम। Thank you, sir. Okay, thank you, sir. End this today's session. Please join tomorrow session. है ना? आज का हम ये सब यही ऐड करते हैं। कल हम फिर 12 बजे मिलते हैं। कल किसी को जो पेपर प्रेजेंट करना चाहता है, तो वो आज हमारे